भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गीता जयंती महामहोत्सव की हरे कृष्णा। परम सौभाग्य है Hare Krishna. We are extremely fortunate that today Bhavna Mataji and Rasik Prabhuji are both sitting together. I thought that you might had a fight. सो गीता जयंती का पावन पर्व So the auspicious month of Gita Jayanti is going on, and not much we are trying to just circumambulate Srimad Bhagavad Gita. In these times, I remember the Varnamala or the alphabets. So in English, it is A for apple, B for ball or bat, B for Bhagavad Gita. In Sanskrit, Hindi and Gujarati, Ka stands for Kamal or lotus, Ka for Katara. So since childhood we've been taught about Katara or trash, then what will he learn when he grows up? But the Ga, our sages and scholars in Subhashitam has beautifully said that Ga word or alphabet is very, very pious, and in Shastras or the scriptures and Vedas, the 4 G's or Ga, if someone remembers them, and if we remember these 4 things starting with G, or if we take shelter of these things, then he will never have to take birth again. The Nitikars have beautifully put it in the verse below. गोविंदो हृदि संस्थित गाइए गाइए गीता गंगा च गायत्री गोविंदो हृदि संस्थितः चतुर्गकार संयोगात् चतुर्गकार संयोगात् पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। सो चतुर्गकार संयोगात, यदि 4 ग से शुरू होने if we का संयोग हो जाए
take the association of the यदि कोई four मनुष्य things that इन start with the चार ग alphabet से शुरू G होने or वाली G वस्तु को या व्यक्ति को or अपने जीवन person में उतारे, imbibes तो them in their उससे life, शुरू होने वाली इन चार वस्तु का or आश्रय ग्रहण करे, if he takes the shelter of तो क्या these कहता four है? things, then what पुनर्जन्म he न says, विद्यते। Punarjanma na उस व्यक्ति vidyate. का, उस That मनुष्य का implies that पुनर्जन्म person or नहीं living होता है। entity will not be reborn again. सो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र So, से if we want to get मुक्त rid होना of चाहते the हैं, repeated cycle of birth and death, इस दुखालयी जगत में पुनः and वापस if we नहीं आना चाहते हैं, want not to come back to या this सदा सदा के world of लिए भगवान के misery, धाम that is वैकुंठ को पाना Dukhalayam, चाहते हैं, or if we desire to तो ग से शुरू reside होने वाली eternally at the इन eternal abode चार of the वस्तु का Lord, आश्रय then ग्रहण करना we should चाहिए। take the shelter of these four ऐसी things, बात starting हमारे with भारत के संतों ने alphabet अपने G or सुभाषितों में G. कही है। And it has been written by अच्छा, our ये wise चार ग से scholars शुरू in होने Niti वाली वस्तु Shastra. कौन सी है? So, what are these तो four कहते things हैं that start गीता। with alphabet G? First is यदि Gita. कोई गीता का आश्रय ग्रहण If करे, someone takes the shelter of Srimad पुनर्जन्म न Bhagavad Gita, विद्यते। then he won't be born फिर again. दूसरा है गंगा, Second is Ganga जो Maya, स्वयं भगवान के चरणों से स्पर्श who होकर आध्यात्मिक जगत का जल has ब्रह्म who रूप is से the लेकर water that इस has भौतिक touched the जगत lotus में feet of आया the है। Lord from the spiritual उस sky and भागीरथी माँ गंगा का came कोई to the आश्रय material ग्रहण world. करे, And if someone takes the shelter तो of पुनर्जन्म Mother Ganga, न then विद्यते। Punarjanmam na vidyate. सो गीता That means he won't be जो born again. भगवान के मुख से निकली है, So the Gita that has गंगा been recited by the जो Lord भगवान Himself, के चरणों which से is चली है, Krishna's speech, Ganga और Ji, फिर which तीसरा has कहते हैं started from the lotus गायत्री। feet of the Lord, and the third is यदि कोई Gayatri. गायत्री का आश्रय ग्रहण करे, So if someone takes the shelter of जैसे Gayatri, गायत्री मंत्र है ओम so भूर्भुव there is a स्वः Gayatri mantra, इत्यादि, लेकिन इस गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए, but to study इसका that or पाठ read करने that, के लिए recite that, शुद्धता चाहिए, we need पवित्रता purity and चाहिए, piety. योग्य समय, योग्य We आसन, should योग्य पात्र have चाहिए। qualified person, परंतु place, हमारे आचार्यों ने and गायत्री etc. मंत्र का But भाष्य our श्रीमद् acharyas भागवत को have स्वीकार किया है। accepted Srimad Bhagavatam सो as श्रीमद् भागवत the और गायत्री में कोई अंतर नहीं। आप ashe भागवत of पढ़ते हो तो Gayatri. गायत्री मंत्र का So फल Gayatri मिलता है। mantra and यद्यपि गायत्री मंत्र में तो Bhagavatam are गलती known होगी तो different. अपराध है, So if you उसका commit a रिएक्शन mistake होगा। in भागवत Gayatri, में it ऐसा will कुछ नहीं। give you सो reaction. कोई But भी if you read क्या आचरण Bhagavatam, करे, there won't be गंगा any का reaction, आश्रय but you will करे get the same fruit या फिर as performing गायत्री the Gayatri. या भागवत का आश्रय ग्रहण करें, पुनर्जन्म न So विद्यते। if you take the shelter of Gayatri or Srimad और Bhagavad चौथी Gita, वस्तु है then गोविंदो Punarjanmam na हृदि vidyati. You will संस्थिता। not be born again. Then the तो last one गोविंद is जो भगवान श्री Govindo कृष्ण है, Hridi Samsthita. हृदि संस्थित, So अपने हृदय में Govind, the स्थित है, Lord who is या फिर situated in गोविंद को our यदि heart, अपने हृदय में स्थित or करके if someone गीता, गंगा, situates गायत्री और Govind in गोविंद, their इन heart चारों को यदि कोई अपने हृदय में स्थित कर दे तो or पुनर्जन्म न establishes them विद्यते। in their heart, they won't पांचवा take birth जोड़कर again. एक So if लगता you हो want to add तो five, गोविंद के साथ लाल fifth, गोविंद भी आप डाल सकते हैं। खैर, सो गीता, गंगा च गायत्री, गोविंदो हृदि संस्थित, चतुर गकार संयोगात, ये चार जो है ना ग so से all शुरू these होने वाली four वस्तु का संयोग start हो with जाए, G or G, एक एक वस्तु and if you get association पर्याप्त of है, these, लेकिन even one चारों के thing is चारों यदि sufficient. जीवन में आ But जाए if you get four तो of फिर these, नहीं क्या। then what can be आपकी said about the जानकारी के लिए ultimate benefit? आचार्यों For ने your बहुत सोच information, समझ के कहा ना, the acharyas have तो इन written चारों or को यदि said नंबर दिया जाए तो गोविंद very का नंबर कौन proficiently. सा है? So if you see the वो numbering, लास्ट बेंच पर then बैठने वाला आदमी है। Govind कि is जिसने and the नंबर last. लास्ट बेंच पर He's the बैठा है, last वो bencher. गोविंद है, चौथे
तीसरे नंबर पर गायत्री है, third दूसरे नंबर is पर गंगा, Gayatri, लेकिन प्रथम नंबर पर second number is Ganga, first the भगवद first गीता। is Srimad Bhagavad Gita. सो तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो So गीता if we गंगा गायत्री और see गोविंद में from the सबसे essence, श्रेष्ठ सबसे then उत्तम श्रीमद् भगवद the गीता है। most better of all is Srimad इसका Bhagavad अर्थ Gita. क्या होता है? आप So what गोविंद does को it implies? मानो, लेकिन If you गीता को believe न in मानो Govind, but if you don't तो आपकी believe in भक्ति Gita, अधूरी है। then your लेकिन एक बार गोविंद devotional को service will जानते be हो, incomplete. But if परंतु you're गीता को unaware of जानते हो, Govind, तो but आपकी if you भक्ति परिपूर्ण है। believe or have faith in Gita, क्योंकि भगवद then गीता your devotional service is complete. Why? गोविंद Because से भी उत्तम है। Bhagavad Gita is भगवान श्री greater कृष्ण, than भगवान श्री कृष्ण की Bhagwan Govind, साक्षात वाणी है। because it is the तो speech ये चार personified बहुत of the Lord. महत्वपूर्ण है और चारों So में these से four are very श्रीमद् important, and भगवद among गीता these four, सबसे भी Srimad Bhagavad Gita महत्वपूर्ण है। is the most भगवद important गीता of क्या all. है? यदि कोई पूछे So if someone asks कि what गीता की exactly is महिमा, Bhagavad भगवद Gita, गीता क्या because है? we've heard the glories of Bhagavad Gita, इस so संसार में सबसे what बड़ा is युद्ध Bhagavad हुआ Gita? महाभारत So का the युद्ध। biggest battle that was सो fought महाभारत in के this युद्ध world was प्रारंभ होने Mahabharat, से ठीक पहले and just before it भगवान श्री started, कृष्ण ने अर्जुन Lord को Shri जो उपदेश Krishna दिया, gave वो the उपदेश ही instruction to भगवद Arjuna. That गीता नाम से instruction प्रसिद्ध है। is famous or भगवद became गीता Bhagavad Gita. महाभारत में Bhagavad भीष्म Gita पर्व in का Bharat एक अध्याय, एक is a खंड chapter है। in Bhishma Parva. श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं It has or it और constitutes सभी 18 अध्याय में chapters, and लगभग of 700 these श्लोक 18, हैं। there are 700 उन verses. 700 श्लोकों में Of these भगवान 700 श्री verses, कृष्ण ने Shri 574 Bhagwan has 574 श्लोक said बोले हैं। 574 verses, अर्जुन के मुख से and 85 Arjun has श्लोक spoken निकले। 85 verses. संजय के द्वारा 40 Sanjay श्लोक बोले गए has और said or धृतराष्ट्र ने recited 40 एक verses, श्लोक। and Dhritarashtra has यदि said नहीं one बोला verse. होता तो अच्छा था। And it would have been better if he 9 had हो not गए spoken that पर 9 also. गुण केवाए। धृतराष्ट्र एक श्लोक बोले, लेकिन If उसमें he, भी समझ में आ Dhritarashtra गया said कि इसका one भाव verse, क्या है but और इसका it क्या made होना it clear चाहिए। what was his intention and what will सो happen in the कृष्ण future. 574, अर्जुन So Krishna spoke 85, 574 संजय verses, 40 Arjuna और 85, धृतराष्ट्र Sanjay 1। 40, and Dhritarashtra 1, आज से यदि respectively. 2022 की बात की So जाए if we talk about this तो year आज से लगभग 2022, 5560 so 5560 approximately वर्ष पहले 5560 years before, this transcendental knowledge of Gita भगवान श्री on the कृष्ण ने battlefield of अर्जुन को Kurukshetra बताया। was given to Arjuna by the Lord. श्रीमद् भगवद गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में भी की जाती है। Bhagavad Gita ये is एक शास्त्र का also सब्जेक्ट है। a this भगवद गीता में discussion point in Shastras, और ब्रह्म and सूत्र भी सम्मिलित है। it is also भारत included की in परंपरा के Upanishad and अनुसार Brahma Sutra. According to the गीता का Vedic स्थान tradition, उपनिषद में Gita है, इसलिए इसे is गीतोपनिषद भी कहते हैं also in Upanishad. That is और why it is धर्म also सूत्र referred to में as भी रखा गया Gita है। Upanishad, and it is also in Dharma Sutras. उपनिषद को गाय के समान कहा गया और Upanishads गीता are को like घी the के समान cow, कहा गया। and इसका Gita is the तात्पर्य ये essence है or the कि milk of the उपनिषद cow. की प्रत्येक That implies विधियां भगवद whatever गीता में is there in उपस्थित है। Upanishads is present in महाभारत Bhagavad के Gita युद्ध as के well. समय During the अर्जुन time or battle of युद्ध Mahabharat, के लिए मना कर रहे थे। Arjuna was अर्जुन refusing अपने to कर्तव्य fight. से भाग रहे थे। He was trying to अर्जुन कुछ escape from कंफ्यूज his थे responsibility. और उस He was समय getting कृष्ण ने confused, भगवद and at गीता that दिया time, जिसको Krishna gave अर्जुन this को knowledge of वास्तव में Bhagavad समझ Gita, में आया। and अर्जुन का Arjuna बोध दूर हुआ, realized his उनकी शंका दूर हुई और responsibility, अर्जुन his अपने confusion कर्तव्य में was removed, निवृत्त and प्रवृत्त he हुए became और अर्जुन को active in सच्चे his धर्म और fulfilling his सच्चे ज्ञान responsibility, से कृष्ण ने अवगत कराया। and he was introduced to the स्थान की दृष्टि transcendental से देखा knowledge. जाए So, तो ये if we घटना see क्यों from घटा? the matter of भारत में place, हरियाणा then स्टेट में it happened हरियाणा में in Haryana, हरियाणा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में and in और Haryana, in कुरुक्षेत्र में Kurukshetra, भी ये and in ज्ञान Kurukshetra, नंदी घोष this knowledge was भगवान given श्री कृष्ण का in रथ है और उस रथ का on the नाम है chariot. That नंदी name is घोष। Nandi Ghosh, which is the सो chariot of कृष्ण Lord ने Shri उस नंदी Krishna. घोष रथ के And ऊपर at that बैठकर Nandi Ghosh chariot, एकादशी के दिन Krishna मोक्षदा
on the day of Mokshada दरअसल Ekadashi, रविवार का दिन था and आपके it was भारत a के लिए, Sunday for your भारतवासियों information. के लिए For रविवार को ही पड़ी ना मोक्षदा एकादशी, residents of तो India रविवार or के दिन Bharat, it was on Sunday एकादशी के as समय well. लगभग So during 45 that से time, 48 मिनट में almost 45 to भगवान 48 श्री minutes, कृष्ण ने अर्जुन Bhagwan को Shri Krishna गीता का ज्ञान सुनाया। gave this transcendental knowledge to Arjuna. यूं तो ये ज्ञान 48 मिनट में दिया गया, Although this लेकिन knowledge was सदियों shared in तक 48 minutes, but युग still युगांतर तक for आने वाली centuries मनुष्य and पीढ़ी for इस millions भगवत of गीता years to का come, आश्रय the लेकर upcoming अपनी सारी generations समस्याओं will का take the समाधान कर shelter सकती हैं, of Bhagavad Gita अपने and वास्तविक कर्तव्यों को समझ सकती हैं, take अपनी आत्मा का उत्थान make कर सकती progress. हैं They can और tr- सभी दुख से transcend मुक्त into होकर upper परम consciousness सुख को प्राप्त हो and सकती can हैं। attain pure भगवत bliss गीता and ecstasy. जो Bhagavad तीनों Gita कालों में in सभी the मनुष्यों 3 का, सभी जीवों का times कल्याण करने वाला is ग्रंथ for है। the welfare of the society at हम सब large. गोपी गीत सुन रहे हैं, So we all are सो गोपी listening गीत to के the Gopi अंतर्गत हम Geet. सुन रहे थे Under Gopi Geet, we were मधुरया listening गिरा Madhuraya वल्गु Gira वाक्यया। Valgu Vakya. गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण Gopis आपकी tell गिरा, Krishna आपकी वाणी that बड़ी मधुर है your speech is extremely और sweet आपके मुख से निकलने वाले वाक्य and the words बहुत that come सुंदर from your हैं। mouth are सो extremely मधुरया beautiful. गिरा और वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। कृष्ण के वाणी की तीन महिमा बताई So कि they वाणी were मधुर telling है, the 3 glories of वाणी वल्गु Krishna's माने speech. सुंदर It is वाक्य वाली है और sweet, बुध the मनोज्ञया word composition is बुद्धि लोगों beautiful, को समझ में and आए Buddhamanogaya और अबुद्ध लोगों को भी समझ में आए, means that ऐसी even आपकी वाणी। intelligent and fools can equally कृष्ण understand आपकी वाणी it well. That is जीवों the के हृदय में potency अहंकार of उत्पन्न the करती है, speech of the Lord. आपकी वाणी It संसार के produces दग्ध तप्त जीवों को love सांत्वना प्रदान and करती it है। provides. और उसकी एक झलक मैंने कल आपको कही थी, जब It, कृष्ण अर्जुन से it कहते हैं, saves अर्जुन people तुम from the मेरे fire of सच्चे the मित्र हो, forest of मैं material तुम्हारा existence. सखा हूँ, मैं तुम्हें So बहुत प्रेम करता हूँ। Krishna tells Arjuna that you are my friend, और I यदि love you देखा too जाए much. And if we तो see 9वें अध्याय के in the 32वें 9th श्लोक में chapter, the हम देख 32 सकते हैं, verse, we can भगवान श्री see कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये he मधुरया tells. गिरा So वल्गु we are talking वाक्यया about this Madhuraya Gira Valgu श्रीमद् भगवद Vakyaya गीता में। in Srimad Bhagavad Gita. गीता के इस श्लोक में कृष्ण In कहते this हैं verse of Srimad Bhagavad कि Gita, हे Krishna पार्थ, says, हे पृथा O के Parth, पुत्र, हे O the अर्जुन, son of Pritha, O माम Arjuna, ही व्यप्राश्रित्य Mamahi कहते हैं Parth ना, मेरा Vyaprishtya. आश्रय ग्रहण कर लो, You दैट्स should इट। take my shelter. That's वहां it. जाऊं वहां जाऊं यहाँ जाऊं ये You should सब not करने roam की here जरूरत and there. नहीं, We should not भटकने की जरूरत engage नहीं। ourselves into this and that. There is no need to do the संसार का same भूला भटका in जीव, this material दाग्ध universe. तपती The दग्ध living जीव, entity who is माम ही suffering in the material व्यप्राश्रित्य, fire of यदि मेरा आश्रय existence ग्रहण कर लेता takes है, my shelter, फिर वो then आदमी कैसा भी क्यों न हो, no हाँ matter अर्जुन कहे क्या who आपका they आश्रय are, लेने वाला where they पापी है stand, तो and if कृष्ण कहते Arjuna हैं asks that पापी, if अरे पापी छोड़ो, that person पापी is को a great पैदा sinner, करने वाला जनरेटर, माने सभी he says पापियों or का replies that पापी, सभी पापियों the का राजा भी क्यों न हो, gravest sinner of कृष्ण दूसरी all, लाइन में कहते हैं, ये he अपि says, पाप योनय, Papa Yonaya. पाप अलग चीज है और पाप की योनि माने जहां So से Pap सारे पाप is पैदा होते हैं, bad ये sin. अलग चीज है। Yone means the place where it तो originates कितना भी बड़ा or पापी, birthplace. So no matter कितना how स्तोत्र grave the भी sinner, क्यों न हो, even the root of the माम great sins, व्यपाश्रित्य, अर्जुन वो if मेरे he आश्रय takes में my आ जाता shelter, है, फिर वह स्त्री हो, वैश्य हो whether it is a या woman शूद्र भी क्यों न हो, or it मैं from the उसे lower परम गति को प्राप्त करा class देता of हूँ, men, मैं उसे मेरे I धाम provide वैकुंठ them में the पहुंचा eternal देता हूँ। abode of the Lord or my देखिए abode. कृष्ण के ये शब्द So हम पापी imagine जीवों को these कितनी words of सांत्वना Lord, देने वाले हैं। how much कई बार हमारे मन में होता है ना strength कि it gives to अज्ञान us. में अनजाने में हमने Sometimes we कितने feel that पाप किए, हम कितना झूठ in बोले, ignorance हमने how much कितना we have कितना गलत committed किया, errors and लेकिन कृष्ण mistakes and कहते हैं sins, पाप
But छोड़ो, Krishna says, पाप यो नहीं forget यहाँ, about the पाप जहाँ sins, से शुरू होते हैं, the बहुत सारे origin पाप point of अगर all the किसी ने sins. किए हो, If, फिर even if चाहे somebody ब्राह्मण हो, has वैश्य हो, शूद्र हो, performed great sins, बस whether they केवल are मेरा women आश्रय ग्रहण कर or लेगा, Vaishya, तो Shudra, if they स take my यान्ति shelter, परमाम गतिम, वो sa परम गति को प्राप्त हो yantim जाएगा. param gatim. That means they सो will ये get है the eternal abode of the मधुरया Lord. गिरा, वल्गु That is वाक्यया, Madhuraya बुध Gira मनो Valgu गया. Vakyaya. गोपी गीत और Mano Gaya. भगवत गीता कनेक्ट होती है यहाँ पर. So here these two, Bhagavad और Gita एक and जो Gopi श्लोक Gita हम सब connect. लोग जानते हैं, So another सर्व verse that धर्मान we all परित्यज्य are aware माम of. एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन Krishna tells सर्व Arjuna, धर्मान, oh, सभी धर्मों को you त्याग कर should माम, get rid of इस श्लोक all का रसिक religious principles. व्याख्या यदि की जाए, So if we तो want कोई भी to श्लोक को देखो, कृष्ण क्या कहते हैं, try to आप श्लोक understand जरा this पढ़ो. verse, so इतने what does बच्चे he हमारे says? अक्षर हैं, पढ़ सकते हैं ना. क्या लिखा है, What is written in माम the second line? एकम Just read that. शरणम व्रज. Mamekam अब Sharanam भाई यहाँ Vraja. कृष्ण ने एकम शब्द क्यों लिखा? So just tell me एकम why शब्द he का has कोई used this word तात्पर्य नहीं है. Ekam. What is the meaning here? संस्कृत व्याकरण के अनुसार, According to व्याख्या के Sanskrit अनुसार, grammar माम शरणम व्रज or the चाहिए, rules of the verses, वो एकम it डालने should की क्या be जरूरत है? Mam Sharanam Vraja. Why he has added तो Ekam एकम here? शब्द से कृष्ण So राधा रानी को याद करते हैं. from Ekam क्या he कहते हैं is कृष्ण? कृष्ण remembering कहते हैं माम Srimati एकम, Radharani. अर्जुन He मेरी says एक ही Mam है. Ekam. That mine is only अर्जुन one. पूछे आपकी एक ही है, एक मनो कौन? कृष्ण कहते हैं मेरी एक ही आइटम है, मतलब मेरी एक ही प्रिया है, He says that जो मेरी there is सबसे only प्रिय one प्रिया beloved है. of me, माम who is the एकम, most beloved of वही राधा all to रानी, me, and उस that is राधा Srimati रानी की Radharani. शरणम ग्रहणम, शरण And you should ग्रहण take करो. the shelter of Srimati Radharani. तो मानो अर्जुन कहे कि So वो if प्रिया Arjuna कहाँ मिलेगी, replies or मुझे कहाँ responds जाना that पड़ेगा, where तो will I दूसरी have लाइन to में go to कृष्ण find रसिक her? शब्द क्या कहते हैं, And माम एकम, Krishna वो मेरी adds, एक आइटम राधा कहाँ मिलेगी, where will शरणम I be व्रज, found her? व्रज Sharanam वृंदावन में Vraja. मिलेगी. That is, she resides in Vraj मतलब Vrindavan. ब्रज के रसिक संतों ने So the भगवत गीता में भी वृंदावन mellowful की महिमा, राधा scholars रानी की of महिमा, Braj, they संतों ने have कहा कृष्ण even in गोकुल Bhagavad क्षेत्र में Gita गए हैं, had लेकिन राधा को नहीं interpreted भूले, as या Radha, फिर ब्रज Srimati वृंदावन Radharani. को नहीं They've said भूले. that even though he एक was on the शब्द को battlefield, he लेकर didn't कर गीता का forget सार बताते हुए Shri Radhika कृष्ण ने Rani अर्जुन से or कहा Braj कि अर्जुन Vrindavan. राधा रानी की शरण में जाओ, ब्रज He is वृंदावन की शरण में जाओ. indicating that we should take the shelter और of यदि Srimati ऐसा Radharani करेंगे and Braj Vrindavan. तो And if we do अहम that, त्वाम then सर्व पापेभ्यो, मैं aham तुम्हें tvam सभी sarva पापों से papebhyo. I will मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर absolve दूंगा, all your sins. Your all sins और will be मेरा धाम absolved. प्रदान कर दूंगा. And और you सबसे will get मधुरया liberated. गिरा You कहाँ will पर है get my eternal abode. इस पूरे श्लोक में? So, in this whole verse, मधुरया where is गिरा वल्गु वाक्या, Madhura ya बुध gira मनो गया. Valguvakya जो Budmanogaya? अंतिम दो शब्द है ना चौथी The लाइन में, last two words ये in बोलने the की क्या fourth जरूरत, line. लेकिन कृष्ण की ये स्टाइल है. This is माँ शुच, Krishna's style. Ma अर्जुन Shucha. माँ शुच, तुम डरो मत, चिंता You मत करो. don't be scared or afraid. कृष्ण Don't कहते हैं, मतलब ये get, कृष्ण की don't स्टाइल be है worried. कि जब वे बोलते हैं When तो उनमें बड़ी Krishna speaks, सांत्वना, बड़ा प्रेम he भरा has so रहता है. much love and concern, सो माँ and शुच, it is always filled. अर्जुन डरो मत, His words are also चिंता filled with मत the करो, same. So he चाहे says जो that भी don't हुआ get worried. वो सब Whatever मेरे has हवाले कर दो, been done in मैं the तुम्हें life, सभी you पापों से should मुक्त करके मेरा धाम surrender it to वैकुंठ me, प्रदान and I करूंगा. will give you my eternal abode. सो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता का So प्राकट्य such इस Bhagavad Gita's महीने में हुआ है. appearance day ऐसी is in श्रीमद् this भगवत month, गीता का हम सब आश्रय ग्रहण and करें. we all should भगवत take गीता के shelter of सिद्धांतों Bhagavad को Gita. समझें, We should try जीवन में to उतारें understand और and भगवत imbibe आश्रय the लेकर philosophical भगवान की points in प्रियता from Bhagavad प्राप्त Gita करें. and आइए attain the गीता की anala प्रार्थना devotional होगी service towards the और Lord. गोपी गीत So में हम प्रवेश करें. now गोपी गीत के विषय bef- में we श्लोकों should का enter आस्वादन the करें. Bhagavad Gita उसके and पहले understand हम the सब verses. So भक्त एक before साथ that, मिलकर we all गोपी should गीत को गाएंगे. recite आगे Gopi पीछे तो Gita गोपियों ने ये together. गीत साथ में गाया है, Everybody इसलिए sang सभी this भक्त
साथ together. मिलकर So इस गोपी we गीत all को should sing गाएंगे। it आइए together. बड़े भाव से प्रेम से इस So गीत का आस्वादन let's करें। recite it together and enjoy it. रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी I welcome all the loving devotees of Srimad Bhagavatam, all the devotees, attendees. I also extend my heartfelt welcome to the senior devotees of our International Society of Krishna Consciousness ISKCON who have decorated this assembly, and I also welcome all of you who have gathered through all the parts of the world through the medium of electronic media, Facebook, YouTube, etc., all the listeners, and with heart filled with love and emotion, the organizers of this beautiful Bhagavatam Katha, the residents of New York, USA, Bhavna Mataji and Rasik Prabhu, and their whole Patel family, their son Ketan and Priya, their daughter Dr. Gopi and Mukesh, and all the kids of the family, and the presiding deity, Madhur Gopal. I welcome you all on the day 3 of the Srimad Bhagavatam Katha. I welcome you all, and please accept our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. Srimad Bhagavat Gopi Geet Introduction. In separation with the Lord, the denizens of Vraja, the gopis, are crying, as you can see in the backdrop. And while crying, they have composed this virah, or the song of separation, which we address as Gopi Geet. And while reciting this song, they have reached a point where they say that we are reminded of your speech in separation with you. We remember what you have said earlier when you used to meet us and you used to speak such sweet words. And it is true, whenever Krishna used to meet the gopis, he would say that today an astrologer came to our home, and they used to say, "Oh, really, Kana?" And they said, "Yeah." And I have shown my hand to this astrologer, and he said that you will be married to this with this gopi.
उसे the one कहते with हैं which एक he साल is तेरा गुजारा, interacting. ऐसा ज्योतिष So ने कहा। the astrologer has said that I will get married to you. That's what the सबको astrologer has टेंशन said. हो जाती, The लेकिन ये gopis है कि used to कृष्ण be सभी गोपियों extremely को है। happy, but he used to say जो this भी to गोपी है उन every सबको कह रहे gopi. ज्योतिष आए थे और तुम्हारे साथ शादी होने की बात कर रहा है। That the astrologer has came and said सो that I will get married to you. कृष्ण So आपकी जो ये बातें हैं the ये हमें way मार रही you हैं। converse or you talk is कृष्ण killing आपके बारे us में जब हम सोचती हैं, when we स्मरण करती are हैं, reminded या फिर आपके of बारे में जब हम your सुनती हैं, beautiful speech, or whenever तो we हमें listen दया about आती you, है। we get गोपियों ने बहुत सुंदर dead. निवेदन किया They और आज से said गोविंद टीवी की एक beautifully. नई कृपा हो रही है। So from today, शुरू Govind तो TV है, is doing one लेकिन जिस श्लोक के शब्दों another की व्याख्या होगी feather in उसे their काट cap. कर बाजू में किया गया है। So the word that आप लोगों will की आदत be बहुत बिगड़ रही है। spoken और एक or नहीं will be और इजी explained हो रहा है will be कि ये put पूरा on श्लोक है। the extreme left. So इस पूरे on श्लोक the में right से is the complete किस श्लोक verse, पर चर्चा and होनी है, the चर्चा verse करना that है, we are going to वो discuss or we are अनुयायी के बारे में discussing, लिखा हुआ है। that will be on the extreme श्लोक तो left. पूरा है, इस श्लोक में The से हम verse किस is पर on the बात right, कर रहे हैं? and on what we are talking, मधुर या गिरा we're talking वल्गु about वाक्य। Madhuraya Gira Valgu Vakya. तो आज से ये नया शुरू So होगा, from today, ऐसे ही होगा। this has सो started, कृष्ण and we will continue the मधुर या same. गिरा, आपकी मधुर वाणी So और वल्गु वाक्य। Madhur Gira Valgu एक Vakya, आचार्य ने बहुत your सुंदर कहा कि sweet प्रकारांतर से speech. So one एक of the अन्य प्रकार से गोपियां learned scholar or acharya has said that कृष्ण की निंदा कर रही हैं। gopis are somewhat criticizing the कृष्ण जी Lord आपकी here. कथा और They say that your आपका pastimes स्मरण जो है ना, and remembering you हमको पागल कर रहा है। is making श्रीमद् us भागवत mad. जी में इसका वर्णन है। It's आप mentioned in ऊपर के Srimad श्लोकों को Bhagavatam. देख सकते If हैं। you can see the verse on the मधुर top, या गिरा वल्गु वाक्य या, श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, it's mentioned in Srimad Bhagavatam. यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपूर सकृदन विद्यु त्वदन्द धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमृत सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। अद्भुत श्लोक है। This is an amazing verse from the mouth of the gopis. माने आपका Krishna Yat अनुचरित, Anucharita. आपका जो That means चरित्र है, Krishna, your और character आपका चरित्र कैसा है, or वो your लीला। nature. And how is it? कृष्ण आप Leela. जो करते हो वो लीला है, Whatever you और do हम लोग is जो a करते हैं वो pastime, कर्म है। and whatever we दोनों का do संबंध is का अंतर karma है। or the लेकिन है कृष्ण deeds. यद अनुचरित लीला, आपकी जो लीला है, So, but your pastimes कर्ण पीयूष, that you ये perform, कान रूपी दोने में, Karna कर्णपुट में Piyusha. सकृत अपि, थोड़ी भी So आपकी कोई if लीला एक बूंद भी कान even में a ना लगे, drop of your थोड़ी pastime भी कोई कथा आपकी सुन ले, gets in the ear, or if someone तो listens to just द्वंद धर्म lit- विनष्टा। little of your pastime, then सो यद अनुचरित लीला, आपकी ये सुंदर लीला, कर्ण if पीयूष, someone आपके कान के माध्यम से listens सकृत the दूषित nectarian ना होता है, pastime in तो his or her विद्युत ear, द्वंद
then धर्म विनष्ट। vidyut dvanda तो dharma इस vinishta, आदमी के जीवन में जितने then भी द्वंद्व धर्म है, all the द्वंद्व धर्म confusion माने विपरीत in धर्म, their विपरीत धर्म माने सुख heart, दुख, that means मान अपमान, हानि लाभ, contradictory ये things, जितने भी sadness and द्वंद्व धर्म happiness, है, विनष्टा। loss and profit, etc. सकृदपि आपकी थोड़ी भी वाणी So किसी even के if कान में some चली listen जाए a और little उनके of जीवन से सुख दुख, your हानि beautiful लाभ, pastimes, मान then अपमान, ये सब कुछ निकल जाता है। all of these और इतना ही नहीं, contradictions तीसरी get लाइन में सपदी, out of their सपदी lives. माने And not only तुरंत, that, गृह sapadi means कुटुंबम, immediately, griha तुरंत अपने kutumbam, गृह कुटुंब में and जो immediately दीनम griha जो kutum दुख, means जो home दुखदाई and है, family, प्रॉब्लम देने वाला है, deenamrit उत्सृज्य उसे त्याग mutsrujya कर deena. दीनहीन होकर, बहुत He, दीना मतलब बहुत दीन होकर आपकी कथा with सुनने great वाला आदमी humility, सदा listens to विहंगा your पक्षियों की तरह pastimes, उड़ते रहता है। will it keeps on roaming मतलब like आपकी ये a कथा जो है ना, bird. पक्षियों की तरह भटका देती हैं। और इतना ही नहीं, भिक्षु Your, चरिया चरंती, आदमी को भिखारी बना he देती हैं। become detached from his family and ये गोपियों का home, एक and व्यंग it है। make the एक ओर person a गोपियां beggar. कृष्ण की निंदा कर रही हैं, दूसरी ओर So कृष्ण on की one पूरी तरह side से प्रशंसा कर they रही हैं are, कि अपने कर्ण पीयूष, अपने कर्णपुट में so सक्रिय they are थोड़ी भी कोई आपकी वाणी contradictory सुने here. So on one hand they are criticizing तो द्वंद्व Krishna, धर्म से मुक्त but on होकर, other hand they गुरुकुल are आदि से appreciating मुक्त him, होकर, that once a person is विहंगता relieved पूर्वक from home पक्षियों and की तरह वो familial भटकते रहता है। responsibility, he roams like a भिक्षु bird चरिया चरंती, and और he भिक्षु becomes भिखारी a की तरह beggar संसार में विचरण करते रहता है। and roams here and there like a beggar. इसलिए Therefore, आपकी कथा, आपकी वाणी जो है, your speech or your कथा pastime, उसे कहते हैं जो कंथा पहना दे। so कंथा माने कोपिन, Katha मुकुट धारण is करा दे। someone that transforms us कंथा into a पहना दे life of वो है कथा। celibacy. Kantha, सो कृष्ण that आपकी is कथा the robe of किस्मत वाली the है। celibate. इसलिए So यहाँ पर your निवेदन pastimes किया, are amazing. मधुरया गिरा वल्गु Therefore, it is वाक्यया। mentioned here, Madhuraya Gira, Valgu सो Vakyaya. कृष्ण आपकी ये So, मधुर O गिरा, Krishna, ये वल्गु your वाणी beautiful संसार छुड़ा देती है, घर कुटुंब voice, परिवार छुड़ा देती है। beautiful and sweet voice एक आचार्य ने बहुत सुंदर अनुवाद detaches किया, one from the home and मधुरया familial गिरा obligation. वल्गु वाक्यया। So another learned एक आचार्य scholar or कहते हैं acharya has मधुरया said, गिरा माने he says ये Madhuraya वेद Gira भगवान means कृष्ण के or मुख से implies निकले हैं, all the Vedas और इन have वेदों been में spoken by the Lord, प्रलोभन दिया गया है। and ये there some करोगे greed तो स्वर्ग has मिलेगा, ये been करोगे तो ये given. मिलेगा। So there are तो the वेदों में जो they have प्रलोभन mentioned है what you have to वो है do मधुर and या what will be the गिरा। benefit. So that greed सो भगवान श्री कृष्ण of गीता में benefit कहते हैं is कि ऐसे the प्रलोभन में Madhuraya हमें Gira फंसना of नहीं है। the Lord. And श्रीमद् भगवद we गीता should के not get entangled दूसरे in अध्याय these. के 42वें श्लोक में कृष्ण ने कहा, In अर्जुन from Bhagavad Gita chapter या इमाम 2.42, पुष्पिताम वाचम, Krishna says, Yamimam प्रवदन्ति Pushpitam विपश्चिता। Vacham Pravadyanti वेदों में पुष्पिताम with वाचा, Vishchita. मधुरया गिरा He वल्गु says वाक्य, that वेद मैंने ही लिखे हैं, I have मेरे द्वारा written ही the वेद Veds, कहे I गए have हैं। composed the लेकिन Vedas, I have मैंने spoken them, वेदों में थोड़ी but मधुर भाषा में in my sweet पुष्पितम voice वाचा, or थोड़ा melodious सा voice, चॉकलेट, थोड़ा सा प्रलोभन दिया है। I have लेकिन sugar-coated the कुछ लोग बस philosophy, उसी प्रलोभन के पीछे पड़े and रहते हैं, because और of भक्त that, some होकर भी people get पश्चितन entrapped और in वेदों that का गलत अर्थ निकालते हैं। तो and वेदवाद रतोत्पा misinterpret रथ the है का Vedas. अर्थ, जो वेदों के वाद में फंसे हुए हैं, So those न who are वेद इति वादिन, वो तो too यहाँ much तक कह देते हैं engrossed कि in ईश्वर understanding जैसा the कोई Vedas, they say चीज that नहीं है, there is भगवान nothing जैसी कोई as the चीज Lord नहीं है, who is बस पुण्य who करो exists. स्वर्ग They say पाओ। that you should just do your duty of work सो and then या you can इमाम achieve पुष्पिताम
heaven. ऐसी पुष्पित वाणी में So he says हे this अर्जुन flowery यहाँ कुछ भी language नहीं है। of Vedas, we should not get तो एक entangled आचार्य or ने entrapped. मधुर या गिरा So वल्गु one वाक्य acharya भगवद गीता has के referred to इसी this श्लोक में। verse और एक आचार्य बहुत सुंदर on this कहते हैं Madhuraya Gira. So कि another मधुर या Vedic गिरा scholar वल्गु वाक्य के explains, माने मधुवत he says, स्वर्ग Madhuvat आदि फलम Swarg तत्र Adik प्रलोभनम Phalam चराति। Tatra Palobhanam भगवान श्री Charati. कृष्ण की वाणी मधु The के समान speech of the Lord is स्वर्ग आदि as फल sweet as प्राप्त honey, कराने के लिए कभी-कभी बड़ी मनोहर लगती है। and it appears to और be इस मनोहर very वाणी के pleasant प्रति because it gives the दुनिया के कुछ benefit लोग of heaven, etc., or आसक्त हो higher जाते planetary हैं, system, and some people लेकिन जो get बुद्धिमान लोग हैं attached to बुद्ध these, मनोज्ञया they become वे greedy. But बुद्धिमान people लोग who are intelligent, but वे Buddha विद्वान लोग Manogaya, that means who are intelligent इस or संसार wise, के अनाचार दुराचार से निवृत्त होकर they get detached from लोकेशना the पुत्रेशना work वित्तेशना and आदि से desires of मुक्त हो this जाते material हैं universe, कृष्ण की इन वाणी and को सुनकर। by listening to the लेकिन speech of गोपियां the कहती Lord. हैं कृष्ण केवल But संसार gopis की इन say इच्छा that से मुक्त होना ही just by getting महत्वपूर्ण नहीं detached है, from these desires is not इसलिए that अधर important. सिधुना Therefore, प्याय यस्वन, इसलिए आप adharasiduna अपने pyaya अधर से yasvana, अपनी that वाणी से by your उन speech, बुद्धिमान लोगों को जो संसार की those आसक्ति से तो intelligent मुक्त हो गए person हैं, who are बैरागी तो हो गए हैं, detached from लेकिन the आप अपनी desires वाणी of material सुनाकर world, उसे but by अनुरागी your बना speech, दीजिए। you उन make वैरागियों them को mellowful आप प्रेमी बना or दीजिए। a lover, सो केवल संसार से विरक्त होना, or you attach them to केवल yourself. संसार की So आसक्ति से just to दूर be करना, detached यही from the महत्वपूर्ण material नहीं world है। is not only important. वास्तव में भगवान का Actually, साक्षात्कार करना we should मानव जीवन have का self परम realization उद्देश्य of है, the Lord, ये महत्वपूर्ण and to है। understand the prime goal हमारे of आचार्य human बहुत life सुंदर कहा, is शास्त्रों में कर्म our कांड, primary उपासना goal. कांड ये सब कुछ है, लेकिन ये So, सब एक नौका के our समान scholars है। have said that all these नौका इसलिए होती है ताकि systems किनारे mentioned तक in पहुंच Vedas जाए। are like सो boat, किनारा है so भगवत that we can प्रेम। cross this material इन सब ocean, साधनों का and the सहारा इसलिए ताकि हम भगवत प्रेम प्राप्त कर wharf सकें। is the ये unalloyed साधन devotional कोई service लक्ष्य towards the नहीं Lord. है, So this boat is लक्ष्य है not the भगवत goal, प्रेम। it is an सो गोपियां instrument. यहाँ पर कहती The हैं goal is कि the मधुर unalloyed या devotional गिरा service towards वल्गु the Lord, वाक्य that is वाक्य Krishna से Prema आपकी or मधुर वाणी Bhakti. से वल्गु वाक्य से उन And बुद्धिमान by लोगों your को Valgu वैरागियों को Vakyaya, आप प्रेमी you बना दीजिए, जैसे make आपने these हमें प्रेमी detached बना दिया। people your lover as you have इस प्रकार done गोपियां with us. In कृष्ण this के manner, वाणी the की दो gopis विशेषता बताई, has एक given the मधुर two वाणी है आपकी characteristics of the और Lord, दूसरी that your वल्गु वाक्य या speech is sweet, माने that सुंदर is Madhuraya, and वाक्यों से Valguvakya, बनी that हुई is आपकी वाणी। beautiful अब composition. गोपियां आगे कहती हैं कि Further, the कृष्ण की gopis वाणी की add तीसरी महिमा the third बुद्ध attribute मनोज्ञया, of his बुद्ध speech, Buddh मनोज्ञया। Manogaya. यहाँ पर बुद्ध का अर्थ So here, Buddh किसी ने कहा means ब्रह्मा, तो अगले Brahma, विद्वान कहते हैं बुद्ध माने but ब्रह्मा others नहीं, say that Buddha कृष्ण doesn't की वाणी implies हमारे जैसे Brahma, लोगों को समझ में नहीं आती। that it बुद्धि says that यत सूर्य, even great scholars and learned बुद्धि persons माने are unable to understand बुद्ध माने him or his विद्वान। speech. So कृष्ण Buddha की means वाणी माने intelligent or भक्त wise या or प्रेमी devotees. समझ सकते हैं। So only the exalted devotees of the Lord can बुद्ध understand his मनोज्ञया speech. का दूसरा अर्थ होता है, Other meaning of आप Buddha इसको Manogaya सैंडविचेज is, करो तो if बुद्ध you break this मन word, Buddh, ज्ञ, Man, ये and तीन Gya. शब्द हो गए। So we can break it into बुद्ध three parts: फिर Buddh, मन then फिर ज्ञ। Man, and Gya. बुद्ध का अर्थ है बुद्धिमान Buddh means और मन माने हृदय, intelligent, Man means जो our heart, बुद्धिमान के मन और ज्ञ माने and, ज्ञान and Gya means आकर्षित knowledge. करे, ऐसी है So भगवान श्री कृष्ण की वाणी। his speech is thus बुद्ध that माने can बुद्धिमान, attract
in the heart of intelligent और जब person, माने ज्ञान को जो आकर्षित करे उसे कहते हैं बुद्ध that मनोज्ञ। is Buddha Mano Gaya. एक आचार्य ने और Another गहरा अर्थ बताया, scholar has बुद्ध मनोज्ञ given a का greater meaning of Buddha Mano Gaya. He says, Buddha Naam Vinigdhanam Mano यहाँ पर Gaya. बुद्ध का अर्थ है प्रेमी। Here it कृष्ण implies की वाणी कैसी lover. है? जो The प्रेमियों को ही speech समझ में of आती है। the Lord is thus that only कृष्ण की the वाणी lovers प्रेमी को or छोड़कर exalted devotees of the Lord ज्ञानी, can understand. तपस्वी, योगी, The ज्ञानी ये persons who प्रेमियों को कुछ perform नहीं समझ सकते। austerity, कृष्ण charity, की वाणी or को acquire प्रेमी knowledge समझ can सकते never हैं। understand जैसे Krishna. बिल्वामंगल Only a lover of the जितने Lord can रसिक understand प्रेमी his संत speech. हुए ना, So ऐसे all संतों those ने कहा mellowful कि जो devotees अरसिक हैं, जिनके हृदय में like रस Bilvamangal नहीं है, Thakur, जिनके हृदय में etc., प्रेम नहीं है, have ऐसे भगवान से understood. प्रेम नहीं And कर those who are सकते। devoid of और this जिनके mellow अंदर रस नहीं है, ऐसे or are अरसिक devoid of लोगों emotion, को के हाथों में मेरा ग्रंथ कभी न आए। and he ऐसे prays कोई मेरा that ग्रंथ कभी न पढ़े, such मेरे people बाणी should उनके never सामने कभी प्रकट read न हो। my scriptures. My लेकिन जो speech should रसिक प्रेमी, never be जो प्रेमी revealed भक्त to हैं, such people, वो because मेरी people who are वाणी devoid of love, कभी नहीं समझ they सकते। cannot understand हमारा my कितना words. सौभाग्य है How fortunate कि are we भगवान की इस वाणी that the रसिक speech लोग of the सुन Lord, रहे हैं। और कथा the का mellowful आयोजन करने devotees वाला are तो नाम listening, ही है and the रसिक organizer's भाई। name itself is Rasik Bhai. तो जो रसिकों को समझ में आए, बुद्ध So मनोज्ञा का अर्थ the है, speech that बुद्ध माने रसिक, is और क्या है? understood by जो प्रेमी lovers of the है, Lord, वो है कृष्ण that की is वाणी। the speech और of the असली Lord. प्रेमी कौन? कृष्ण की And who is the साक्षात actual सखी lover कौन of है? the Lord? श्रीमती राधा रानी। That is Srimati गोपियों की Radharani समझ and कहें the gopis तो कृष्ण की or वाणी inhabitants of को Raja. या If राधा जानती है या the ज्यादा से essence ज्यादा of his गोपियां जानती speech है। is हम understood लोग by तो Radharani and फाफा मारते हैं, little ये तो by the सौभाग्य है gopis, we कि all are श्रीमती just राधा रानी trying. चैतन्य It's महाप्रभु our की great वाणी fortune that और Srimati इसी Radharani व्यासपीठ came सनातन हमारे or आचार्य के appeared हाथ में प्रकट as हुए। उन्होंने Chaitanya हमें ग्रंथ Mahaprabhu, दिया, and we got कुछ अभ्यास acharyas कराया like Sanatan और and क्या Rup कर रहे हैं? Goswami, and they इन ग्रंथों को, इन वाणी को थोड़ी बहुत हम समझ पा wrote, रहे हैं। interpreted, and we practiced. सो बुद्ध मनोज्ञया। Therefore, we could understand a little. एक आचार्य ने बहुत सुंदर अर्थ किया। One acharya has गोपियों ने given a कृष्ण की beautiful वाणी की interpretation. तीसरी महिमा बताई। The third कृष्ण की वाणी attribute of बुद्ध Krishna's speech, मनोज्ञया, फिर Buddha दूसरा Mano क्या अर्थ Gaya, किया? he बुद्ध माने अबुद्ध। says, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी Abudh. लैंग्वेज में He ये says अबुद्ध है या हम लोग अबुद्ध है। बुद्ध माने that we are बुद्धिमान, Abudh. बुद्ध माने Budh जिसकी means बुद्धि नहीं intelligent, है। and Abudh means तो एक आचार्य ने ignorant अर्थ or किया who has no अबुद्धानाम wisdom. अपि मनोज्ञयाम, जो So अबुद्ध he है has कृष्ण की interpreted वाणी जो that मूर्ख Krishna's है, speech, which जो is मूर्ख में भी मूर्ख है, उसे भी the समझ में आ जाए तो least क्या intelligent बात of है, all, or who पंडितों is को a fool, समझ में क्यों ना आए? can understand that. How can a great तो scholar क्या or बताया? pandita cannot understand it? बुद्ध मनोज्ञया का पांचवा अर्थ एक And the आचार्य ने fifth बताया, meaning by another acharya is ज्ञानी नाम अति Buddhanam मनोज्ञया। Jnaninam Ati कृष्ण की वाणी Manogaya. इतनी मधुर है, Krishna's speech is so sweet and melodious जो ज्ञानी है, जिसका हृदय that बहुत शुष्क हो चुका है, the जिसका हृदय people, a कोरा हो scholar चुका, who's ऐसे कोरे who has so हृदय much वाले acquired so को भी much कृष्ण knowledge की वाणी but who आकर्षित कर is देती है। devoid of emotion और एक आचार्य ने यहाँ तक कहा, जो can निर्विशेष, also जो get निराकार ब्रह्म में the आसक्त है, sentiment. And another has said that a people who कृष्ण are की वाणी उन into Brahman निर्विशेषवादियों को, impersonalism, निराकारवादियों को भी so thus आसक्त कर देती हैं। people are also और इसका attracted ज्वलंत प्रमाण by भागवत the में Lord's कहने speech. वाला And सुखदेव गोस्वामी, the जो example निराकार for the ब्रह्म में same आसक्त is थे, लेकिन Shukdev कृष्ण Goswami, की the वाणी speaker of Srimad Bhagavatam, कृष्ण का who गुण was का into रूप धारण impersonalism, करे but श्लोक after listening to सुखदेव the verse गोस्वामी of ने Srimad आस्वादित Bhagavatam, कर लिए। he became attracted to the सो कुल Lord. मिलाकर गोपियां So, in essence, कृष्ण the की बहुत gopis सारी महिमा बताती हैं are कि हे speaking the कृष्ण, आपकी गिरा, आपकी वाणी मधुर
they're speaking about the attributes or characteristics of Krishna's speech. So even an intelligent or even a fool can understand your speech. Sri Chaitanya Mahaprabhu has interpreted this verse very beautifully. And on what word are we speaking? Budh Mano Gaya, Valgu Vakyaya. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu interprets this first line in the mellow of Srimati Radharani speaks or recites. गंभीर ध्वनि नव घन ध्वनि जिनी जार गुण कोकिल लजा आया तार श्रुति एक कणे डूबे जग तेर काणे पुन काण बाहुडी ना जा आया। गंभीरा में महाप्रभु अपने Mahaprabhu in Gambhira during the time of the final days of his life, he was contemplating on this, and he used to say about Buddh Mano Gaya, Kanthera Gambhir Dhwani. How is Krishna's speech? It is serious. Gambhir means serious. How? Navagan Dhwani Jini. As the new clouds that are formed, and when they thunder, the sound of the thunderstorm, Krishna's speech is also serious. And how sweet is it? His voice was so melodious that even a quail or nightingale used to be ashamed. So, usually, kokil or koel is considered to be the most melodious, but even she used to be ashamed and she used to go away. Such melodious was the voice of the Lord. Tara Shruti Ekane. So by just one word of listening one word of the Lord, and the whole world used to drone, and they all wanted to listen more and more again and again. Punakana means again and again. Further he adds, हरिले अमार काणे नापा एबे नापाय तृष्णाय से श्रीमुख भाषित अमृत परामृत स्मित कर्पूरता ते मिश्रित। कृष्ण रज शब्द गुणे Krishna Raja Shabda Gune, the quality of Krishna's word, Harile Amare Kane, that means they are stealing or attracting my ears. Ebe na paye Trishnaya Mari Jai. And by listening to his speech, I'm not satisfied yet. Trishnaya means satisfaction.
अमृत है ते से परामृत, श्रीमुख भाषित. कृष्ण के मुख की भाषा His, the अमृत speech से भी of अधिक उज्जवल his है। is better स्मित than the मुकुर ताहार श्याम, elixir. अमृत तो कोरा है ना, अमृत में फ्लेवर नहीं है, Elixir is लेकिन devoid of कृष्ण की taste, वाणी but अमृत के समान है। Krishna's speech is और केवल like वाणी ही नहीं, nectar, वाणी के साथ साथ कृष्ण but not only स्मित, that, मंद मंद Smith, मुस्कुराते हैं। he smiles तो a बोलते little भी हैं or और साथ slowly. साथ So मुस्कुराते he भी हैं। speaks and he smiles चैतन्य slowly महाप्रभु कहते together. हैं कि And बोलना Chaitanya अमृत Mahaprabhu है says that और his कृष्ण का speech मुस्कुराना is भी अमृत nectarian के समान है, मतलब and उसमें तो his फ्लेवर का smiling is like स्वर्ग का a अमृत कौन सा flavor. है, उसमें तो क्या कोरा And अमृत है। कृष्ण the की nectar वाणी of ही अमृत तो higher है, planetary systems or उसमें heaven फ्लेवर is होता है, devoid of उसमें मिश्रित flavor, नहीं it's होता। just elixir. But तीसरे नंबर Krishna's पर speech महाप्रभु आगे is कहते हैं, flavored nectar. Further, he शब्द adds, अर्थ दुई शक्ति नाना रस करे व्यक्ति, प्रत्यक्षर नर्म विभूषिता, से अमृतेर एक कण कर्ण चकोर जीवन, कर्ण चकोर से ही आशे। शब्द अर्थ दुई शक्ति, so कृष्ण की there are two potencies, शब्द की भी that शक्ति is है the और word कृष्ण की and वाणी में अर्थ the भी है। meaning. Shabd means the अर्थ word, की भी Arth शक्ति means है, the meaning. So they both are नाना potent रस करे in व्यक्ति, Krishna's speech. अनेकों Nana प्रकार ras का रस kare भरा vyakti, हुआ that है, means it is प्रत्येक filled कण with different नर्म mellows विभूषित है। कृष्ण की or वाणी का emotions. प्रत्येक अक्षर बहुत सुंदर रूप से आभूषित है। And विभूषित each मतलब word is कृष्ण decorated. शब्दों को भी Vibhushit means it आभूषण, is bedecked, ऑर्नामेंट, अलंकार पहनाते हैं and he और उस decorates them प्रत्येक with कण the alankars, that is जैसे मानो कृष्ण the की वाणी grammatical चंद्रमा की nuances. चांदनी है और So हमारे as कान चकोर के समान है। the जैसे his चकवा speech is like a moon, and his speech स्वाति is नक्षत्र like की a बूंद को लेने chakwa के लिए who gets व्याकुल attracted रहता है, वैसे to कृष्ण the इस moon, वाणी रूपी अमृत as के a कण को, bird, chakor, ये चकोर gets attracted to पीता है get और the वही कृष्ण drop की of वाणी a nectar उस from the चकोर का जीवन है, moonlight, कर्ण रूपी चकोर का that is जीवन है। his और life. मेरा कर्ण रूपी Similarly, चकोर कृष्ण की वाणी की my आशा से ear, जीवित है। like this bird, अंत में is महाप्रभु ने बहुत just सुंदर कहा, living on the hope भाग्य of वश listening प्रभु पाए, to him. जिसका And further, भाग्य है as वो इस वाणी को Bhagyavashi पाता है, Kabuprai, a person who is fortunate जो gets it, अभागा है and those who are unfortunate, abhagya means unfortunate, will never वो receive नहीं it. पाता। और न पाइले मरे ये पियास, और जो कृष्ण की वाणी And को नहीं those पाता who don't उसका get जीवन the व्यर्थ speech of the Lord, their निष्फल हो life जाता है। is futile and is destroyed. सो इस प्रकार So, in this मधुरया manner, गिरा Madhuraya Gira वाक्यया, Valgu Vakyaya. श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी Sri Chaitanya Mahaprabhu also has भक्तों जीव गोस्वामी ने requested about the श्रीमद् qualities भागवत of की the टीका Lord's लिखी। speech. सबसे पहले So, लिखा है उन्होंने Sridhar क्रम संदर्भ, Goswami has मन written नहीं Kram भरा। Sandarbh, and तो he स्वामी wrote ने the दूसरी interpretation. टीका लिखी He तो was not उसमें satisfied, so he वैष्णव wrote तोषिणी। another सो scripture वैष्णव that's named तोषिणी में Vaishnav Toshini, कृष्ण की वाणी के and 21 गुण, कितने he गुण has गिनाए? written अभी about तक 3 गिनाए ना, 21 मधुरया, qualities of the speech of the Lord. मधु वाक्यया Gopis have और mentioned here the मधुरया। 3 qualities गोपियों or के पास टाइम भी attributes. कहाँ था, The Gopis didn't have that much time as well. कृष्ण की वाणी के 3 So गुण गिनाए। they just उसके presented the बाद 3 जीव गोस्वामी qualities. ने But Sri कृष्ण Jeev की वाणी के Goswami 21 गुण गिनाए हैं। has written about the भक्तों ये 21 श्रीमद् qualities of Krishna. आचार्यों का धन है,
And these are the assets of our हमारे आत्मा Vedic ने scholars. समाधि में बैठकर इस धन को They पिया है have और हम सबको drunk दिया है। this in the state of trance जीव and गोस्वामी shared it with वैष्णव us. तोषणी में लिखते हैं Sri Jiv Goswami writes in Vaishnav Toshini the 21 पहला qualities गुण of Krishna's speech. First, Ati अगर Madhur, इसकी that is, व्याख्या करने जाएंगे तो if इस we पर एक 7 eh, दिन की कथा हो सकती है। just interpret this, 21 गुण हैं it requires 7 days कृष्ण katha. की वाणी के 21 गुण रोज 3-3 गुण को लेकर एक-एक सत्र की कथा चल सकती है। आने वाले दिनों में सोचेंगे। So we will plan it लेकिन पहला in गुण है future. But अत्यंत the first मधुर। attribute is Atyant कृष्ण की Madhur, वाणी that का is दूसरा गुण है extremely स्वर melodious. विशेष। Second, Swar Vishesh, बिल्कुल नाप तोल कर it is very balanced. स्वर कृष्ण का चलता है। He किस speaks in a balanced समय manner. पर किस सुर At में what किस स्वर में time, बोलना which है। melody हमारा स्वर should तो be थोड़ा एक used. ही लाइन में होता है। Our melody एक is ही in a सुर में straight, हमारी वाणी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं। but किस for Krishna स्वर it's को different. दबाना है, किस When में स्वर he को ऊपर ले has to जाना है, raise his pitch or lower स्वर his विशेष, pitch, ये दूसरा गुण so जीव that is the गोस्वामी का। quality. That is what Jiv हम Goswami भी has सीख written. सकते हैं, कृष्ण Even we जैसा can also लेकिन नहीं try. हो सकते, सोच We भी नहीं can't be सकते। like Krishna. We cannot even imagine that. But these are the qualities. तीसरा गुण है And the वर्ण third विन्यास। is Varna Vinyas. कृष्ण की वाणी में वर्ण का विन्यास विशेष रूप से होता है। So he चौथा गुण है uses the प्रेम words मृदुलता। in a different manner. कृष्ण The की वाणी में fourth is प्रेम भरा, Prem Mridulta. That means मधुरता his भरी होती है। speech is filled with पांचवा love गुण and है affection. Fifth quality दूसरों में is रुचि देना। he माने to प्राणी give मात्र को, interest to others. मनुष्य नहीं, Ruchi means पशु interest. पक्षी को Not only just humans, but रुचि also दिलाना the है birds कृष्ण की and वाणी। plants get attracted or get कृष्ण की वाणी interested का छठा in गुण his है speech. The sixth attribute or सुंदर quality पद is समन्वितम। Sundar कृष्ण की वाणी Samanvitam. का में जो His पद होते हैं speech, वो the बहुत सुंदर prose रूप in से his समन्वित किए जाते हैं। speech are कृष्ण attached in a वाणी का beautiful सातवां manner. गुण And the seventh आकांक्षा is के सोष्ठव से युक्त Ankankshak होता है। Sashtha Yukta. आठवां गुण है Eighth योग्यता is के सोष्ठव से युक्त। it नौवां गुण है has शक्ति के qualified flow. सोष्ठव से युक्त। 10वां गुण है So all the सुवंत अर्थात grammatical qualities तिरंग पद are समूह there in कृष्ण his की वाणी speech. में है। 11वां गुण है So the 11th attribute is जिसमें Arthagya. बहुत अर्थ है। That means 12वां it गुण has है deep meaning. मनोज्ञ। 12th is Manogya. 13वां गुण है Third, शब्द की अभिज्ञा से 14th, पूर्ण। it is 14वां गुण है filled शब्द की with लक्षणा से पूर्व। complete 15वां गुण goal है and व्यंजन quality. वृत्ति से पूर्ण। 16वां गुण है Then रस Vyanjan से Vritti, पूर्ण। it is filled 17वां with गुण mellow. है भाव से 17th पूर्ण। is it is 18वां गुण है mellowful. अलंकार से पूर्ण। 19वां Then गुण है अर्थ से पूर्ण। 20वां गुण है गांभीर्य से पूर्ण। और Gambhirya. 21वां गुण है And 21st is बुद्ध जन Buddhjan, आनंद प्रदान करने to वाला। provide bliss इस to प्रकार the intelligent. श्रीमान In this जीव manner, गोस्वामी ने Sri Rajiv भगवान श्री Goswami कृष्ण की वाणी has की 21 गोपियों ने spoken आपको about 21 the महिमा बताई। 21 attributes कृष्ण of भगवान की Krishna's speech. विशेषता बताई। जीव गोस्वामी ने Gopis have mentioned केवल मैंने पॉइंट बताया, एक्सप्लेनेशन 3. फिर कभी So करेंगे। I've just shared that. The explanation we will discuss sometime afterwards. आप मूल श्लोक में देखिए So if we go to the fundamental verse, what are the कृष्ण gopis आपकी saying? इस वाणी से हम Krishna, गोपियों by पर your speech, बहुत असर हुआ है। has affected us a lot. कृष्ण की वाणी यदि हम सुने If तो we have, हमारे if जीवन we में listen कुछ to ना कुछ असर his होगा। speech, then it will और affect कृष्ण की us. वाणी सुने और जीवन में असर न हो And if we are तो listening to समझो his सुनने speech में and आपकी कोई we कसर होगी। we are not सुनने में कोई getting कसर होगी। affected, then that implies that बाकी there कृष्ण might be की some वाणी सुने और असर shortcoming ना हो। in our कृष्ण की वाणी listening. की गोपियों पर दो असर हुई जो So आप देख सकते हैं। there were two things that happened or transformed into gopis that you can see in this verse below. वल्गुवाक्यया
बुध मनो ज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करी विमा वीरमुयति अधर सिंधुना प्याययस्वना। हे कृष्ण, Oh Krishna, आपकी वाणी की हमारे जीवन में दो असर your हुई है। speech has तो आप समझ ही गए होंगे ना श्लोक की जो made रचना two है, effects. जो So, श्लोक में से छांट कर बाजू में लिखा so the two qualities that are mentioned कृष्ण की वाणी on की the extreme पहली left. असर क्या हुई? So first विधि is करी रीमा, Vidhi Kari Rima. और दूसरी That असर was क्या the हुई? effect on the gopis. And the second was Muhyati. कृष्ण आपकी वाणी सुनकर So by listening हम to your आपकी speech, विधि करी, हम Vidhi आपकी विधि Kari, करी हो चुकी है। we विधि have करी become मतलब your क्या Vidhi होता है? Kari. Vidhi Kari implies माने Vidhi, स्वामी के द्वारा, मालिक के that द्वारा a विधि की serv- जाती है, the rituals or रेगुलेशन। rules and regulations और made विधि by माने करने the वाली, master. पालन करने वाली। And मतलब स्वामी के Kiririma means द्वारा the one who बनाई हुई follows विधि them. का जो पालन करे So the उसे one who विधि करी follows the कहते हैं। rules and regulations तो दूसरे शब्दों made में by the master दासी, is विधि Vidhi करी माने Karirima. दासी। So it implies a स्वामी की maid बनाई servant. हुई विधि को करी, करने वाली विधि करी, that means दासी। So a woman who सो does कृष्ण or follows आपकी the वाणी rules की and regulations made हम by पर असर हुई है। master. So क्या असर हुई your है? speech has कि आपकी transformed वाणी us. सुनकर After हम listening to आपकी your विधि speech, करी हो चुकी है, we have हम become आपकी your दासी हो चुके maid हैं। servant. सो विधि करी शब्द से अर्थ हो गया, So लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ा गया, इमा। there is विधि one करी other इमा, word that is इमा added माने here. इदम, It is इदम Ima. माने प्रत्यक्ष Idam. रूप से गोपी अपने आप को That is, दिखा रही है। they are showing themselves इमा, इस प्रकार से हम लोग that आपकी in दासी this हो गई manner हैं। we have become हम your विधि maid करी servant. हो गई हैं। We have transformed into अर्थात Vidhi Kiri. कृष्ण That means, आपकी oh दासी Krishna, ऐसी हो चुकी हैं कि अब आपके we have चरणों में हम become your जीवित maid हैं। servant, that we cannot live एक in separation with you और first. दूसरा असर क्या हुआ And कृष्ण की second वाणी का? effect of जिसे Krishna's अपन कहते हैं speech is मुह्यति। Muhyatir. आपकी वाणी सुनकर By हम listening to your मोह में पड़ speech, गई हैं। we have become कृष्ण आपकी वाणी हमको मोह में डाल रही है। attracted to you. मोह का एक अर्थ ये भी होता है, So the meaning of मूर्छित moh हो जाना। is unconscious. कृष्ण आपकी वाणी सुनकर हम मूर्छित सी हो रही By है। listening to your या फिर speech, दूसरा अर्थ, we आपकी are वाणी becoming हमको नहीं unconscious. सुनने मिल रही, आप तो छिप And गए, आप as तो you छिप are गए, in hiding तो or आपकी you वाणी नहीं have सुनने से unmanifested, हम लोग मोह, मुहियती माने मूर्छित हो रही है, छटपटा रही है। so एक आचार्य कहते हैं कि मृत्यु के पहले आदमी जब मरता है ना, शरीर त्यागता so है, when a person is about तो to leave शरीर his त्यागने से body, पहले की मतलब इमीडिएट शरीर त्यागने से so पहले जो अवस्था होती है the stage उसे when he's मृत्यु about to अवस्था leave कहते हैं। the body, मृत्यु that is मुग्धा called अवस्था कहते हैं। murdha or मुग्धा mugdha अवस्था avas कैसी होती है? state. आधा मरा हुआ होता है आदमी, वो टोटल So नहीं a मरना, person मरवा पड़ो है ना, मरण is मरण not संस्कार totally होता है, dead, आधा but मरा he's हुआ, जिसे half मुर्दा dead. अवस्था कहते हैं, So that is मूर्छित अवस्था murdha कहते हैं, or और इसे mugdha, मोह भी unconscious, कहते हैं। and it is also called तो as moh. गोपियों का यहाँ पर So निवेदन the ये है gopis are कि कृष्ण requesting आपकी or वाणी implying that your हमने पहले speech सुनी है और we अभी have आपकी heard वाणी हमको previously, सुनने नहीं and मिल now रही that है, we are not able to हम listen आधी मरी हुई the हैं, same, so we are half हम dead. आधी मरी हुई हैं। कृपया करके आप अपनी वाणी So हमें सुनाइए, please हमें जीवित कर दीजिए।
make us listen to your speech and उनका revive कहना us. है Muhyati's other meaning कि जब शराब implies पीने के बाद after कृष्ण drinking liquor, a person gets कृष्ण intoxicated. आपकी वाणी का हमें नशा So चढ़ चुका your है, speech has हमें intoxicated इतना नशा us, हो गया है and we आपकी are वाणी so का much कि हम intoxicated लोग मूर्छित that होकर गिर गई हैं। we are unconscious and have fallen down. आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, It is mentioned in Ayurveda यदि that किसी if को शराब someone का नशा है, is intoxicated by liquor ड्रग्स लेता है, or by some शराब drug, लेता है etc., और वो शराब बहुत ले लिया, and बहुत if he ले ली, drinks too much or intoxicates तो वो himself too मूर्छित much, होकर गिर जाता है। then he will become unconscious. फिर कभी उनके स्वजनों Then को पता चल गया, if अगर the कोई family दूसरा members उनको शराब become न aware दे, and they ड्रग न दे, तो भी वो don't मूर्छित हो allow them जाएंगे। to intoxicate, then also they become तब आयुर्वेद कहता unconscious. है कि So Ayurveda says वो शराब नहीं मिली इसलिए मूर्छित है, because उस they are समय not तत्कालीन उसका intoxicated, उपाय क्या है? that is why they are उसको unconscious. So शराब what दे is दो the तो वो solution? खड़ा हो The जाएगा। solution is to give him some आयुर्वेद liquor कहती है and then he आपकी will वाणी rise. का हमको नशा हो चुका है, So the gopis are saying that we are intoxicated by आपकी your वाणी speech, हमको नहीं and सुनाई now पड़ that रही we है, are इसलिए हम लोग not able to मूर्छित हो listen गए, to you, therefore we are हम लोग unconscious, मुर्दा अवस्था में, muhyati, that मुक्त is half अवस्था में dead or आधे मर चुके हैं। intoxicated or half यदि dead. आप तत्कालीन हमें जीवित करना And चाहते if you हैं want to revive us तो आप immediately, हमें then अपनी वाणी सुना दीजिए, you should make us hear your speech. आप अपना वो अधर अमृत Please हमको speak to पिला us. दीजिए Please और give the हमें elixir जीवित कर of your दीजिए। words and revive इसलिए us. गोपियां आगे कहती हैं Therefore, Gopis अधर adds सीधुना, further, Adhar Sidhuna. हम लोग मुहियती मूर्छित हो गई हैं, We are इसलिए हमको unconscious, जीवित करने के लिए so आप to revive us, अधर सीधुना, Adhar अधर Sidhuna. सीधु, अधर सीधु Adhar मतलब means lips आपके होठों and का अमृत हमको Sidhu पिला means दीजिए। nectar. So give us the nectar of your अधर lips. सीधुना प्याय यस्व, आपका अधरामृत पिला दीजिए। So इसका अर्थ please ये give है the elixir of कृष्ण your words. आपकी So जो that वाणी implies थी उस that the वाणी को हम speech that बार you बार सुनने की spoken, लालसा we हमारे want to अंदर में हो रही है, listen वो it again वाणी and again. We ऐसे are सुना दीजिए। greedy or anxious to listen it again and कौन सी again. वाणी? So please speak कभी that to कृष्ण us. श्रीमती And राधा what रानी Vani? ऐसा कहते So हैं sometimes कि Krishna used to मेरे tell Srimati चाहे Radharani मेरे प्रति that कठोर बनो या you मृदु should, बनो, even if you are sweet मैं or जो भी harsh सत्य towards me, बोलता हूँ but I तो will तुम ही tell you मेरा the truth प्राण हो, that you सत्य are जीव my मेरा life and सर्वस्व हो, soul. You are तुम्हारे my बिना everything, मेरे and प्राण without की you, कोई गति नहीं है। I have no person. श्रीमती राधा रानी इतना सुनकर मूर्छित हो जाती After है। listening to this, आज Srimati हमारे अंदर Radharani में used ये to become सुनने की unconscious. लालसा हो रही है। And today she has the desire to कृष्ण कभी listen to गोपियों it को again. कहते हैं हे Krishna गोपी tells the प्रिय, gopi sometimes that, तुमसे oh बढ़कर beloved, मेरे लिए greater than you, कोई there is प्रिय no नहीं है। one देखना beloved गोपी, than you. तुम्हारे लिए मैं So सब कुछ छोड़ दूंगा I will leave लेकिन everything for तुम्हें your कभी sake, नहीं but छोड़ूंगा। I will never leave ऐसा you. कृष्ण सभी गोपियों को That कहते हैं। is हे what he गोपी used to प्रिया, tell to all the gopis, but today these कृष्ण gopis ये सुनना चाहती हैं want to listen to this इसलिए again. अधर सीधुना Therefore, they're saying, अपने मुख से Adhara Sidhuna, that वो Krishna, by वाणी का your वचन mouth, रूपी अमृत you should हमें पिला दीजिए। give this nectar of your words to us. हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा ताप है In all और वो ताप our heart is a एक great चीज से दूर हो सकता है, आपके वचनों को fire, सुनकर, and that can be आपके अधरामृत को पान करके। that कृष्ण के can be वचन removed by just listening to you or by just कृष्ण seeing you. आप आकर फिर से हमको प्रिया कहिए, So आप Krishna, you आकर should फिर से come हमको and प्यारी कहिए, you should आप say हमारे आंसुओं or को address us पोंछिए, as beloved. हमें आलिंगन दीजिए। You should embrace ये us, गोपियां remove रिक्वेस्ट our करती tears. हैं। That is what the फिर gopis से are याद requesting the Lord. कराएं, Let me remind you गोपियां all, कृष्ण को सुनना gopis चाहती हैं, want to कृष्ण listen to गोपियों the के Lord. आंसू पोंछे, They गोपियों को want आलिंगन दे। that he should अंदर wipe से देखा their जाए तो tears इसमें गोपियों and का कोई स्वार्थ नहीं है,
embrace them. So internally, it is not their ulterior or selfish motive, but it is just an excuse that Krishna will come and his misery will be removed. So ultimately, their goal is to make Krishna satisfied and happy, to remove his distress. So, oh Lord, please give us the nectar of your lips. So, Sidhu means nectar, and Adhar means. So, one Acharya has interpreted this Adhar. If we break this word, so there are two words, A and Dhar. So one is Dharamrit, that means the nectar of Mother Earth, and there is another that is Adharamrit. That means that nectar that doesn't belong to this material universe. That means it is the spiritual or transcendental nectar that is called Adharamrit. So they are not expecting the nectar of this material universe, but Adhar. So she doesn't want, requires the nectar of Mother Earth or of heavenly planets, but of the transcendental nectar, and they should give them. And no, so this no is very important. The last word, Pyaya Yasva no. It implies that the gopis are not selfish like us. This no means, it implies it's a plural word. They haven't said that, oh Krishna, you are very busy, so you should come and give this elixir to me. But they say, Pyaya Yasva Naha. That means we all, you should make us drink all of us. So they are in a group and they say that you should bestow your mercy on all of us, not like the devotees of Kali Yuga, that we should get the wealth and opulence. It should not go to the neighbor's home. It should not go to anyone else's home. But great are the gopis and their heart, where they're telling that we all should be given nectar by you. Devotees in our country, the sages have taught us that whenever we pray to the Lord, it should not be selfish. It says, Sarve Sukhana Bhatun. Sarve Bhavantu Sukhina. That means all the world in this world should be happy. And the sages have taken everyone together. And this composition of the sages is these gopis. So they are taking everyone together and praying to the Lord. So yesterday I promised that gopis heard the words of the Lord and heard the elixir of his speech. And if we have this desire to get this nectar of the speech of the Lord, then this question was asked by Bilva Mangal Thakur, and this mellow of Srimati Radharani is interpreted in Krishna Karnamrit by him. चितामृत रसानी पदार्थ भंगी वल्गो निवल्गित विशाल विलोचनानि
बाल्याधिकानि मदमल लव भाविनी भी भावे लुठन्ति सुकृतां तव जल्पितानि। काम की बात अब आ रही है। So this is the thing that is for us or for our interest. So the fortune that the gopis or Srimati Radharani got. So first of all, we should understand how is the speech or Adharamrit of the Lord. Bilva Mangal is a great Sanskrit scholar and whose heart had Krishna dancing, or he had Krishna dancing in his heart. So he says that how are the words of the Lord? He says in the verse above, you see, Prayachitamrit. So we water the plants. So that is called Sinchan. So we give water to Tulsi ji. Similarly, Krishna's each word is reaped by Krishna's by nectar. So here it is written Prayachita Amrita Rasani. So by the nectar, the each and every word of the Lord is empowered, or that his words are filled with nectar. And not only that, along with that, Padartha Bhangi. Along with that, it has the meaning and prose and how Valguni Valgita Vishal Vilochanani. So, first of all, Valgu Smith. So, Bilva Mangal Thakur is discussing the attributes of Krishna's words. So, it has beautiful prose and meaning. Not only that, there is a smile of the Lord, and without that, he has his eyes are also working. So I just understand by this that whenever we speak, not only the words are important, but the composition, the meaning, the prose, and your smile, and even your eyes, they all are important. That is what Krishna is teaching. So whenever we speak, eyes also play or portray a great role. Even the smile works. If someone speaks with a bad face, then nobody wants to listen to that. So his words are reaped by elixir and beautiful composition and meaning. So it also says that his speech is Balya Adhikani, that a child is naughty. So his speech also is naughty, and it hurts, or and when he discusses with the gopis, then there is so much things that are discussed. But all these talks of Krishna, the discussion that he does with the gopis, the exchange in the fourth line is for our benefit. Bhave Luthanti.
So the speech of the Lord, the devotee whose heart is filled with emotions, sukritam tva jalpitani, in his or her heart, all these things manifest. That implies, Srimati Radharani says, in a secluded place, the discussion that he does with us, or the exchange of emotion, discussion that he does, it can be achieved by two types. First, by sukritam, that is piety, a person who has performed great pious deeds. So in their heart, this beautiful speech of Lord manifests or appears. So the person who are fortunate, in their heart, this speech appears. Only the fortunate has this speech appeared. But the people of this material world are engaged in this material world, and its speech are unfortunate. But the fortunate get this speech appear in their heart. So who is Sukritshali or fortunate? A person who serves the pure exalted devotee of the Lord. Those are pious people or fortunate ones. So if we desire the nectar of Lord's nectar, then we should serve the exalted pure devotees of the Lord first. And second, Srimati Radharani adds Bhave Lutanti. That is, Krishna's speech will be appear in the heart of a devotee whose heart is mesmerized or unfilled with the mellows of the gopi. There only it will appear. So it is very important word, Sukritam and Bhave Lutanti. So a person who is fortunate among us and the one who has this mellow of gopis, they will achieve this nectar of the Lord's speech. Guru Maharaj requests, there is the glory of the mellow of gopi. It is not what like as appearing as a gopi. Sometimes people outwardly show themselves as gopi, but inwardly they are not in the mood of gopis. But it is called sahajyas. So if some mothers they they appear as gopi, but some men also dress as gopis and they consider themselves to be the gopis. This is inappropriate. It doesn't look good also outwardly. We should not wear the clothes or appear like gopis. We are supposed to bring their emotion, sentiment in our heart. The people who have this sentiment in their heart will only be able to taste the elixir of the speech of the Lord. And the disciplic succession we follow, they have taught us and they have done that themselves as well. In regards to Shad Goswamis, in Shad Goswami Ashtakam, it is mentioned about the Gopi Bhav here in this verse. पूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कन्थाश्रितो गोपी भावरसा मृताब्धि लहरी
कल्लोलमग्नोर्मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हमारे आचार्यों के विषय में कहा गया, in regards to our acharyas, it is mentioned here, Tyaktva, ये हमारे रूप सनातन रघुनाथ our कौन थे? 6 Goswamis, Rup Sanatan, etc. A person who has nothing अब जिसके पास है and ही नहीं, who वो क्या छोड़ेगा? and had to leave. A person who doesn't have anything, कौन? मैं he has ब्रह्मचारी। anything. तू So, ब्रह्मचारी नहीं, तुझे किसी ने लड़की so, दी ही नहीं है। so if someone says that I am a celibate, लाचार maybe ब्रह्मचारी you बोल। are बाकी यदि कोई brahmachari or celibate because of compulsion, because nobody gave you a daughter to जो marry. लाचार है ब्रह्मचारी, Otherwise, you वो would नहीं have है। married. जिसके पास बहुत कुछ है So a person who और has उसने everything छोड़ा। and yet they leave it, that is a हमारे great आचार्य कौन थे? feat to perform. Our अशेष acharyas were who? मंडलपति। Ashesha Mandalpati. अशेष माने मंडल माने Lies. राज्य, स्टेट। Mandal means अशेष kingdom. अनंत अनंत राज्यों के राजा थे ये। So they were the kings of great लेकिन उन kingdoms. अनेकों राज्यों को, अनेकों Yet देश को सदा सदा के लिए forever, त्यक्तवा Tata तूर्णम means तुच्छ, forever, घास के तिनके की तरह and तुच्छ के समान they उसने त्यक्तवा left. त्याग दिया। Tyaktva means और to भूतवा detach, दीन, और दीन भूतवा और दीनहीन tuchvat, होकर like as if they were the हृदय material की opulence was कोमल nothing, कोपी and लंगोट in कंथा this धारण situation करके they तीसरे wore नंबर पे only one cloth, गोपी that is भाव। kopin, and ड्रेस गोपियों का नहीं पहना, हमारे they were आचार्यों not ने wearing the dresses ड्रेस of the पुरुष का gopis, नहीं धारण they were किया। wearing the dress of a लेकिन man, भाव क्या था हमारे आचार्यों का? that is a गोपी single भाव। cloth, but their mood was सो of the उन्होंने gopis. कंठाश्रितो कोपिन और कंथा धारण करके गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी, वे रात Gopi दिन bhava गोपी rasamritabdi भाव lahari. में रहते थे। So they always were और वो engrossed भाव in the में mood of the रहकर gopis, कृष्ण के इस रस and का they प्याय used to यस्वना, इस Pyaya अमृतांजन Yasvana, का they पान used करते थे। to drink the elixir of ये तो हुआ Krishna's अंदर की speech. बात। ये So this गोपी is भाव जो है inward. ना, ये So this अंदर की बात, Gopi अंदर bhav छिपा है, also अंदर is है। inwardly. It should be सबको hidden दिखा करके from फिर रहे हैं, मैं all of कृष्ण us. हूँ, मैं तो गोपी भाव में हूँ, हाँ, मैं We should माधुर्य not में reveal हूँ, it वो that किस में है? we're in Madhurya or we are in Gopi bhav. ये कोई चर्चा का In which विषय melody? नहीं है। These are not the topics of हमारे discussion. आचार्य ये सब अंदर रखते Our थे। acharyas और kept it बाहर से क्या inward, करते थे? and outwardly what they आचार्यों used का to do, लौकिक वर्णन किया गया। it is mentioned that outwardly they used to do what? In this verse. पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यन्त्यदीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हमारे आचार्य अंदर से गोपी भाव, Our acharyas were inwardly in the sentiment or emotion of the gopis, but outwardly they used to count and chant the holy names of the Lord. That is, they used to chant, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
सो अंदर से गोपी भाव, So inwardly they had this संख्या पूर्वक mellow or sentiment of gopis, but outwardly they used to chant the holies of the name of the Lord. नाम लेते थे, They संख्या पूर्वक used भजन to गाते थे, count and संख्या chant. पूर्वक They used to sing the नर्तनी माने songs of the Lord. करते थे। Natanibhi means they used to bow down at the lotus feet of the Lord. गोस्वामी, Our Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, भगवान को एक दिन में 1000 in a बार day प्रणाम करते थे। used to bow down at the lotus feet of the Lord 1000 times, and not like us in short, but they used to do Sashtang Dandavat Pranam. Sankhya Purvak here is important, that is with proper count. So they used to count and bow down at the lotus feet of the Lord 1000 times, and they used to bow down at the lotus feet of the devotees 200 times. And if they don't get 200 devotees, then they used to remember their qualities and name and offer obeisances at their lotus feet. It is mentioned about them, Ananta Guner. गुण रघुनाथे की करीबे लेखा, रघुनाथेर नियम जैसे पाषाणेर रेखा। इन आचार्यों का नियम, These acharyas rules and regulation for as strong as a संख्या पूर्वक line on the stone हम लोग भी जब संख्या पूर्वक नाम लेते हैं ना, is engraved. तो दुनिया And when we also do count, the people of the world, material world, ask, you chant the holy names, but you count? He said that we can't, because our acharyas have done that. तो बहुत So छोटी बात है, to count the holy names of the Lord is हम गिनते fe- नहीं हैं। very small तब उन feat to लोगों do. को कहना चाहिए, So we should reply आप जब किसी से पैसे when लेते हो you तो take गिनते हो, or transact money with others, बिना don't गिने you कैसे count चलेगा? how it will मतलब work आप without किसी से counting? पैसे लेते हो तो So गिन when कर you लेते हो, transact मतलब ये in है money, कि that आप then you count, पैसों को that वैल्यू means देते हो। you value the आपके मन money, में पैसे की वैल्यू है, इसलिए आप उसे गिन therefore कर you लेते हो। count it. हमारे मन में भगवान And के नाम की वैल्यू है, in our इसलिए heart, हम इसे there is गिन a कर value लेते of हैं। the holy names of the Lord. That is why we count, and भाव we यही है कि that नाम should be our धीरे धीरे sentiment, बढ़े, that कम हो gradually जाए, it should इसलिए increase. संख्यापूर्वक नाम Therefore, नहीं this Sankhya Purvak or counting is very important here. कई बार अब यहाँ नीचे लिखा है ना, Sometimes, श्रीमद् now भागवत that it is mentioned below, 346 कथा, 3 346th Katha, संख्या हुई so ना, this also is a counting. इससे भी बड़ी प्रॉब्लम So some people have trouble with that as well. 346 लिखने की क्या जरूरत What is the need to write है? 346 आचार्य here? ने ही संख्यापूर्वक So किया यहाँ पर, the acharyas have only told that we should count. इसमें प्रॉब्लम क्या है? So what is the problem if the Govind TV writes संख्या it? समझ में पता होगी तो दिन भर दिन हम So आगे if की we ओर know बढ़ेंगे। the count, then only we can progress further. If we are not aware of our count, then आलस the प्रमाद की ओर आगे बढ़ता है, people in this material world, especially in Kali Yuga, is progressing in lazy towards laziness हमारे and आचार्य ignorance, गिना है, and because of that, से गिनना चाहिए। our acharyas have guided or taught us to count so that we can progress बाहर से हरि नाम, or measure our progress. और इसी में That is why Sankhya Purvak, इसी में उनका that is by सारा counting, सारा and समय बीतता था। the whole time of their दूसरी लाइन में day used to be used in this. And what they used to do? Nidra Ahar Vihar. That means Vijito. They had won over hunger, sleep, and desire to roam here and there. से कई बार कुछ लोग बहुत उपदेश झाड़ते हैं, So sometimes people say, सामने बहुत उपदेश देना चाहिए कि talk a lot in front of me, that we should not eat onion and garlic, शराब we नहीं should not पीनी eat, चाहिए, we should not intoxicate ourselves, ये नहीं करना चाहिए, etc. ये नहीं We करना should not do चाहिए। this and that. सच कहें तब In मेरे मन truth, में एक ही भावना आती है, I have one emotion or sentiment at उपदेश that, देते हैं, that ये you मत खाओ, वो मत खाओ, preach others that you should not do सबसे this and पहले that. वो उपदेश But हमको लागू पड़ता first है। of all, we should apply it on our lives, छोड़ दिया that नशा, we have left onion, garlic, intoxication, etc. But थोड़ी छोड़ा
We haven't left ज्यादा to सोना eat कभी much. छोड़ा है? We have left to sleep दूसरों के more. नियम सिखा रहे हो, पहले अपने नियम We're का तो teaching ध्यान others. रखो, First, we should follow है ना? the मैं जब भी principles ये in बोलता our हूँ, life. We should मुझे imbibe नहीं them in लगता our है life. कि अब उपदेश तो When डाल रहा I हूँ, tell लेकिन someone, I हमारी think that सेंसेस थोड़ी I'm ना telling, कंट्रोल में है but कि are हाँ, our senses यहाँ से पार controlled? थोड़ी होने वाला है। यहाँ कहते हैं निद्रा विजितो, हमको हमारी निद्रा So को we कंट्रोल have to करना है, control our भोजन को sleep, कंट्रोल करना our है, diet, विहार माने and संबंध our संसार में जो हम फंसे हुए हैं, engagements in this धीरे धीरे material उनको भी world. कंट्रोल में करना We है। need to control that as well, न तो ये कुछ gradually. कंट्रोल हुआ है, So we haven't दूसरों controlled को any of कह के this, दूसरों को and उपदेश देने we के लिए। try to preach others. सो हमें धीरे धीरे करके ये भी So we should try to दूसरों को imbibe कहते these हैं also in our चाय quality. कॉफी मत पियो, ये मत We खाओ, tell वो others खाओ, that we should उसका not पेट drink मटके की तरह, coffee and एक coffee, मटका भी ठीक है, दो पांच मटका आ जाए, हैं? and they have a उनका कोई कंट्रोल में नहीं है। stomach like a और pot. So they don't have any हाँ, control on others, but they preach others. सो कभी कभी अपने गिरबान में भी झांक कर So देखना sometimes we चाहिए should introspect कि केवल दो ourselves तीन as well. नियम पालन कर लेने That से there's जीवन just बर्बाद following two, तो three नहीं हो गया ना, principles. I'm हमें भी not अभी an exalted बहुत कुछ devotee. कंट्रोल करना Even है। we need to और मैं control तो so much. दिल से कहता हूँ Let कि me कभी कभी open my heart and समय की say, मर्यादा के कारण बोलना भी sometimes पड़ता है because of the कि तुम Vyaspeeth, गार्लिक मत खाओ, I have to tell लेकिन people उस that we समय should not मेरे drink मन में onion and ये garlic. But बैक माइंड में ये तो in चलता है back of my कि mind, दूसरों को तो it is बोलूं, that लेकिन मैं I'm खुद telling others, but आहार ज्यादा कर रहा हूँ, am निद्रा I not ज्यादा कर eating रहा हूँ, more? Am I not खुद sleeping नियम का more? पालन नहीं करता, दूसरों को झाड़ता Am हूँ, I following the ये नहीं है ना। principles and I'm preaching others? It's not तो appropriate. कई बार हमें ऐसा भ्रम होता है कि Sometimes हम we तो are in सारे नियम illusion फॉलो that करते हैं, we are following all the regulative principles, but भोजन that's not यदि true. भोजन We कंट्रोल should होता ना, control the तो diet. भजन में कभी प्रॉब्लम ना होता। If our ये diet is भजन में controlled, then प्रॉब्लम इसलिए we है will not face क्योंकि any भोजन distress while कंट्रोल में performing नहीं है, another devotional हमारी service. निद्रा We, कंट्रोल में नहीं है, our हमारा sleep विहार is not in कंट्रोल में नहीं control. है। Our material ये विहार engagement is किसको not in कहते control. हैं? What does निद्रा this का vihar मतलब आ means? गया, Nidra निद्रा means sleep विजितो, that we निद्रा understand. को विजयी Nidra करना है। vijito to आहार का, defeat आहार भी समझ में आया, sleep. विहार का मतलब क्या है? विहार Ahar माने means to फेसबुक, eat, and vihar means विहार माने Facebook व्हाट्सएप, or WhatsApp. That is the व्हाट्सएप immaterial माने विहार engagements. और व्हाट्सएप है? विहार माने सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो, So ये सब social देखना है, media, TV, लेकिन etc. इसे भी कंट्रोल करना है। are in material engagements or हमें vihar. दूसरों को उपदेश नहीं So देना they है, also needs to be controlled. So अपना भी we देखना just है। need not to preach others, but सो we also निद्रा should imbibe आहार and विहार follow. The Nidra विजितो, Har इस Vihar प्रकार से निद्रा को Vijito. वश में करे, आहार को वश में करे। So we should control our sleep, diet, और and जो material अत्यंत दीनो engagements. चयो, और अपने आप को And अत्यंत दीन Dino बना के Chayoyo. रखे। And we should राधा live कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा, as a Deen आनंदे न or a सम्मोहितो। और राधा कृष्ण के गुण and Radha Krishna की Gunes स्मृति Prito. में निरंतर The लीन qualities of रहना Radha चाहिए। Krishna should be in जैसे our हमारे heart and आचार्य mind. Such were our हमको सिखाया acharyas करते थे। सो कहने who का तात्पर्य यह है कि यदि हम used to behave outwardly like this. So प्याय it यशवना implies that Vyaya कृष्ण के Yasvana. इस अधरामृत का पान करना चाहते हैं, If we तो want to taste सुखदेव the जी ने elixir of Krishna's मधुसूदनों speech, की सेवा की, then और we should कृष्ण serve the गोपी भव, exalted devotees of the Lord अंदर to से गोपी earn भव, बाहर से हरि नाम Kriti or भव। fortune, यदि and इस प्रकार से or करेंगे तो निश्चित ही we यह should प्रकट हो जाएगा। have this emotion or बचपन sentiment में of gopis in our heart. जब इस प्रकार से गोपी ने यह Then only उपदेश we will दिया, be able to drink the nectar of his तब speech. So, what happened when भगवान श्री the कृष्ण gopis said this? Then गोपियों के imagine सामने प्रकट हो गए। Krishna when appears in कैसे? front of the शरीर gopis, से प्रकट नहीं, उनकी वाणी प्रकट हो गई। not through his body but through और his मानो speech. कृष्ण गोपियों को कहने लगे And कि if तुम ऐसा he दावा करती said हो कि तुम मुझसे that प्रेम कर रही हो, गलत। you say that you तुम्हारा मुझसे love कोई me, प्रेम नहीं है। you don't have any love क्यों? for me. Why? क्योंकि काम अंधतम Because प्रेम Kam निर्मल Andatam. भास्कर, क्योंकि प्रेम
because this love के समान होता है is pure और like प्रेम the का sun लक्षण rays. क्या है? And what are the qualities or प्रेम attributes का of लक्षण love? ये है The कि attributes of प्रेमी love यदि are साथ में that न a हो, lover is not with you. प्रेम करने वाला पात्र यदि साथ में न If हो your beloved is तो not उस with विरह में you, प्राण निकल जाने चाहिए। then you should, the body यदि should leave, आपके the soul should प्रेमी leave the नहीं body. है, So you're इसका still मतलब है alive. That कि implies तुम कह तो रही हो that you are saying कि हम आपसे प्रेम that करती हैं, we love लेकिन you, तुम्हारा प्रेम है but नहीं। the love doesn't exist. जैसे As समुद्र में जल में पानी in में ocean, अनेक प्रकार के जीव रहते there हैं। are so many types of living मगरमच्छ पानी में entities. रहता है, So a crocodile is कछुआ there भी in the पानी में water. रहता है, Even a tortoise resides मछली भी there. पानी में रहती है, Fishes stay अनेकों there. जीव पानी में So there are रहते so हैं, many living entities पानी that से reside असल में in प्रेम water. किसका? But who loves the मगरमच्छ water the most? The crocodile नहीं, or a tortoise? क्योंकि No. मगरमच्छ Why? क्रोकोडाइल Because को पानी से बाहर crocodile, निकाल के even if तो is भी वो devoid जिंदा of रहेगा। water, he can survive. मगरमच्छ पानी में भी जी लेता है, पानी के बाहर भी जीता He है। can इसका live अर्थ ये in है and outside water. पानी That में means रहता तो है, he लेकिन lives in the पानी से water, प्रेम नहीं but है। he doesn't loves the एक water. कछुआ भी पानी में जल Even में a रहता है, tortoise stays in the लेकिन water, उसका जल से but प्रेम नहीं है क्योंकि वो he जल के doesn't बाहर भी loves जी जाता है। it because he can survive without water. But मछली का जल से the बहुत fish प्रेम होता है। actually loves क्यों? the water the most. Why? क्योंकि मछली को यदि जल से बाहर When निकाल we दो remove fish तो वो from the जल के water, विरह then में छटपटाती in रहती है। separation she जैसे ही जल से gets दूर होती है तो agitated तड़पती है and she और तड़पते हुए अपने प्राण को त्याग देती है। dies. She leaves her इसका मतलब body. होता है That proves मछली that का जल से प्रेम है। fish loves the water the most. तो गर्व लेने वाली बात है, And हमारा we जन्म should be उस proud देश that में हुआ है we जिस have देश been में born in बचपन such a से country ही where यह in प्रेम का प्रकरण सिखाया जाता है। we are छोटे छोटे taught बच्चों this को mellow of बताया love. जाता है Small kids are मछली told जल की मछली रानी जल है, की रानी है, जीवन उसका उसका पानी है। पानी है, हाथ लगाओ तो डर डर जाएगी, जाएगी। बाहर So निकालो the fish तो is मर the जाएगी। queen of the water, and if you bring her out, बचपन में then ये she will सीखेंगे, die. Her life बढ़ते and soul बढ़ते is ये water. समझ में So this आएगा is कि taught जीवन in भर our नहीं रहेगा। schools as during our जल childhood. से So सच्चा when if we प्रेम understand this, मछली का है। then we can understand the love. कहते हैं मछली को जल से आप निकाल दो ना, So if we separate the उस water जल from से the दूर fish, करके आप मछली को कुछ भी दे दो, कुछ and भी, if you give her anything उस मछली apart को from खाना water or खिलाओ, except water, रसगुल्ला खिलाओ, टीवी दिखाओ, एरोप्लेन में घुमाओ, so even मछली if you नहीं offer सुहाएगा। उसको anything, एक ही चीज चाहिए, television, food, etc., but she only requires only one thing, that is water. If you put it in the water, she will be satisfied. क्योंकि अपना Otherwise, she will पूरा be देश distressed and leave her कृष्ण body. गोपियों से कहे So कि Krishna ये दावा tells करती gopis है कि that तुम मुझसे प्रेम you कर रही हो, गलत। say that you love प्रेम me. तो This is मछली not का जल से true. होता This है is false. कि Because मछली a को fish पानी loves में the डाल water. दो When तो they वो are मर जाती है। separated, she dies. और आज मैं तुमसे दूर हो गया हूँ And तो now I'm तुमको मर जाना चाहिए, away तुम from रह you, ही so नहीं you all पाओगे। should die. But तब you गोपी all कहती are मुझसे alive. प्रेम नहीं That करते, means that you don't love me. तुम्हारा मुझसे प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो तुम If जीवित you कैसे had love, रहती? how could you be alive in यदि separation? प्रेम सच्चा प्रेम होता If तो the तुम love जीवित was true, कैसे रहती? how तब could you गोपियां be कहती हैं, alive? कृष्ण Then gopis आपके add, विरह में हम कब की मर गई होती, we would have died in लेकिन separation with आपके you, विरह but में हमको जिला रही है आपकी we कथा। are living just because of your कृष्ण आपके katha विरह or pastimes or proclivity. तव कथामृतम तप्तजीवनम तव कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण Oh Krishna, in the fire of separation with you, we would have died long back. But this fire of separation is even difficult than being dead. We should die. It's better to die than to live in this situation. So if we remove the fish from the water, it gets agitated. And if I tell that agitation better or to die is better, it's better to die in that situation than to live. So your separation is extremely distressful situation, even greater than death itself. And still in such condition we are alive, and the reason is Tav Katha, your pastimes or proclivity. So this verse has been discussed in great detail by the acharyas. First of all, if we understand this, try to understand this word Tav Katha. So we just need to understand these two words, Tav Katha. That means Tva means yours and Katha means proclivity or pastime. And if we try to understand this, and if we speak on this and keep everything aside, the gopis are stressing Tva Katha. That means the pastime is only of yours. Others' stories are the stories of distress, that is Vyatha. Everything else is a headache. The pastimes are only of the Lord. So this is a very important word, Tva Katha. Yours pastime. In English, beautiful. Whatever the Lord does is done, is called pastime. So whatever Krishna does is called pastime. And whatever we do is time pass. So that is the only difference. What Krishna does or performs is pastime, and whatever we do is time pass. Tva Katha. So this Tva Katha, when Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj met, then Parikshit Maharaj told Shukdev Goswami that, oh Goswami, please share the pastimes of Lord. So I'm talking about Tva Katha. When Krishna, Parikshit inquired or was inquisitive about the pastimes of the Lord, Shukdev was ecstatic and he said, that's a great inquiry. You are great, Parikshit. Today I can say that you are a king. He was not the king. The king was Janmejay at that time. But Shukdev said, Variyanesh, Nripa. He said, O king,
You are दुनिया के actually राजा a शरीर king. का भरण पोषण करते हैं, The kings of the world लेकिन तव takes care कथा of the body पिछली of their कथा की citizens, जिज्ञासा but तुमने की है, this उससे inquiry शरीर about का the नहीं pastimes of the Lord, आत्मा का it पोषण nurtures होगा। not the body but the soul of the सुखदेव living ने सुंदर entities. कहा, मैं आपको Shukdev दोहराता ji हूँ, beautifully श्रोतव्या responds. He दीनि says, नरेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश राजन, सुनने के लिए तो हजारों बातें हैं। he said, to listen, there are दुनिया में जब thousands चलते of हैं, things which keep मैं जब go ऐसी on in कथा the मार्ग material world. मार्ग When करता I हूँ, कथा पूरी start दुनिया from में the world, चलती है, that एक आदमी भी चुप कहाँ बैठता है, is फलाना going बात on. करे, वो उससे So बात करे, everybody is talking to everybody else. Nobody keeps तो श्रोतव्यादिनी mute. राजेंद्र, हे राजन, सुनने के So लिए तो हजारों बातें there are हैं, thousands of things to be heard, लेकिन जो आत्म but तत्व को नहीं जानता, a person who अपने doesn't आत्मा की understand उन्नति नहीं uh, समझता, self-realized, who वो is not संसार self-realized के or who doesn't बंधनों need में फंसा रहता knows है, how to progress, दुनिया is की चर्चा में entangled फंसा in रहता है। the discussions of this material दिन world. भर ऑफिस की चर्चा करने में, दुनिया की Throughout they चर्चा discuss करने about में, the office और and the शाम को world, घर पर आता है तो and टीवी when चालू he करके comes बैठ back जाता है। he starts the television. जीवन तो बीत ही रहा है संसार So की the life चर्चा में, is going संसार की on बातों में, and getting wasted in तस्मात् this इसलिए material, the हे discussions of material world. भारत, हे Therefore, परीक्षित, O Bharat, जो O सर्वात्मा Parikshit, है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, जो Sarvatma, भगवान that है, is the जो ईश्वर है, जो Lord हरि in है, the heart of हे every living परीक्षित, entity, that Paramatma or परमात्मा Hari, भगवान ईश्वर हरि उसी Ishwar, कृष्ण के विषय में श्रोतव्य, and सुनना to चाहिए। we should listen about him. किसको? Who लास्ट should लाइन में listen? कहते हैं, It's mentioned in the last इच्छताम line, अभयम, Ichchatam जो Abhayam. अभय चाहता है, For those who जो desire to be मृत्यु से बचना fearless, चाहता है, who want to be जो spared by मृत्यु the रूपी blow दुख से of भय से death, मुक्त होना चाहता है, want to be उसे devoid of भगवान the fear ईश्वर of हरि death, या कृष्ण those की कथा should listen श्रोतव्य, to the pastimes or सुननी चाहिए, proclivities of कीर्तितव्यस्य Lord गानी Bhagwan चाहिए, Ishwara Hari or Paramatma. स्मर्तव्यस्य स्मरण करनी चाहिए। And किसकी कथा? the तव कथा। Samrita, that means this we should गोपियों ने एक छोटा सा remember. शब्द दिया, So just और the बात gopis वहीं said अटक कर गई। a small word, कृष्ण, कथा आपकी होती uh, है, बाकी सबकी they have व्यथा portrayed होती a है। great philosophical point तो that the मुझे कुछ pastimes are बोलने of का the मन नहीं Lord है कुछ बोलने and का, others. मुझे तो रामायण Discussion बोलना is चाहता pastime. है। So I have to speak a lot on these रामायण में words. वाल्मीकि ऋषि को I पूछा even remember Ramayana. कि प्रभु मुझे Valmiki कहाँ रहना Rishi चाहिए, was asked, वाल्मीकि ऋषि ने कहा ना, where कथा should तुम्हारी। I stay? So Ramji asked, where should I stay? वाल्मीकि ऋषि ने भी यही कहा, Valmiki replied that Katha तुम्हारी Tumhari. तुम्हारी कथा, जिनके श्रवण समुद्र So समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, होई निरंतर होई न पूरे, तिन के ही तुम कहूं गृह रूरे। तब कथा। सो समय हो चुका है, so the तब time कथा के is ऊपर आप up. अपना मन So रखिएगा, we should keep अभ्यास our focus कीजिएगा on Tva Katha. We will और start from सुनिएगा। here tomorrow. गोपियों का ये आंसर, ये उत्तर है And the कि answer of the कृष्ण आपके gopis विरह में भी हम that जी रही हैं, we are केवल living आपकी कथा सुनकर। in separation with you just कथा की because क्या of क्या your महिमा है, pastime. And what are the इस glories कथा of को the सुनेंगे, proclivities of the Lord? We will discuss in detail सभी tomorrow. भक्त बने रहिए। So आप you सभी all भक्त stay tuned. बड़े You भाव all से have been इस listening कथा with को so much श्रवण love कर and रहे हैं। emotion. भारत में लेट नाइट है, It's लेकिन late night कई in भक्त Bharat. लगे Still, हुए the हैं, devotees are क्योंकि awake. रात को सुनने का ही सब्जेक्ट है। Actually, this is a दिन subject to listen क्या है in the बहुत night ये होता है, because in the morning और there is so much संख्या disturbance भी कम है तो अच्छा है, and the क्योंकि participants are limited. So फिल्टर it's होकर good श्रोता बैठे because हैं। the only the filtered बड़े listeners are सुंदर there गोपी गीत की जिसकी to listen. योग्यता है वही So those who are सुनेगा। qualified सो to listen to Gopi Gita are धन्यवाद, sitting. So बड़े धैर्य से I'm grateful to इस all of कथा you का आप सब that you श्रवण all कर have रहे been हैं। listening this katha विशेष धन्यवाद with patience. पटेल I'm greatly परिवार, thankful रसिक to the भाई, Patel भावना family, माता Rasik Bhai, Bhavna और Mata, पूरे परिवार को and the whole आपने बड़े family. भाव से, You यद्यपि with आप क्रूज में आ रहे हैं, heartfelt, मुझे न्यूज you're मिला है, coming to the cruise. लेकिन I फिर भी અમારા heard the ફેમિલીઓને news. ઉમળકા એટલા આવે ને
but we are so much engrossed in emotion. After 1 month, we are going to meet. There will be a katha physically, but the heart emotion cannot be controlled. So they have organized this katha, and we all are getting benefited by the same. So we are extremely grateful to you. So let's conclude the today's session with Jai Jaikar. पुराण की श्री कृष्ण चंद्र भगवान